कर दो यार, करो, क्लिक करो. Good evening, children. Can you hear my voice and can you see the screen? Respond in the message and tell me if you are able to see the screen, you are able to see me, and Dipanshu bhai, हाँ चलेगा Dipanshu bhai. There is a delay of at least 15 seconds, so he was there before 15 seconds. Is my voice clear? Is my voice clear? Okay, good evening, good afternoon, good morning to everyone. Alright, so we are going to do a few caselets. DILR के अंदर the questions have been chosen very seriously instead of any hi-fi uselessly difficult questions. We have chosen the questions which are very close to CAT, very close to CAT in terms of language, in terms of presentation. ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन की जो शक्ल सूरत होगी वो काफ़ी कैट के क्लोज होगी. ठीक, एंड द स्टाइल ऑफ लॉजिक एप्लीकेशन, राइट, as I keep saying, out of 20 questions in DILR, hardly 2 or 3 questions would be beyond your reach. Rest 17, 18 questions are going to be within very normal logical approach. So the questions have been chosen in such a manner which give you a very clear idea of what you can actually expect in the exam. Okay. Today's session is going to be around 3 hours. Okay. Today's session is going to be around 3 to 6. We'll see if we are able to finish by 6:15. I plan to do at least 5 sets. अगर हो गया तो देखते हैं, 5 सेट करने की कोशिश करेंगे. बहुत शांति से, प्रेम से, अच्छे से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. Yes, this will be available on YouTube for lifetime. ठीक है. चलो, anything else you want to ask? Just next 2 minutes में कुछ पूछना है फटाफट पूछ लो. Then we'll go to the sets. If anyone wants to ask anything else, otherwise we shall start with the session. We shall start with the first set. Usually एक set दूंगा मैं. I'll give you a few minutes just to look at it and see what you can do. ठीक है. And then we will solve. I'll solve the way I would solve in the exam. ठीक? चलो, let's start with the first set. So this is the first set. This is based on one of the PYQs. Take 2 minutes to read it. Read carefully. Questions will follow. Use pen, paper. Use pen, paper. Sit properly, professionally. Any tips towards approaching a set or selecting a set? Read carefully, that's it. Read slowly. And while reading, if you are able to make out what has to be done, good, attempt it. If not, leave it. As simple as that. Simply leave it. Thank you, sir, for PYQ solutions. Your experience are more an aptitude than just applying theory. Yes, absolutely. What is the difference between DI and LR? Achha. DI is data interpretation, LR is logical reasoning. Please do not give CAT because you mentor set the cutoff very high. No, that doesn't happen like that, Kashish. We make sure that we don't get a call. If we appear, we make sure that we don't get a call. मतलब एक सेक्शन में 0 कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे ताकि कॉल ना आए, वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं. दूसरी बात, मैंने 6 साल से कैट नहीं दिया, इस बार भी नहीं दे रहा हूँ, so don't worry. Okay. And there is another thing, when
they give calls at least in the ratio of 1:3, 1:4. मतलब एक सीट के लिए 3 लोगों को. So 400 सीटों के लिए 1200 लोगों को बुलाते हैं. So more or less is good enough. Brightness कम कर दूं, that is not in my hands बेटा. How do I reduce the brightness? I don't know that. Just let me check. Maybe because of this white color background ऐसा लग रहा होगा. कोई बात नहीं, अगले slide में ठीक हो जाएगा. Alright, so this set is a pretty easy one. Let's do it fast. फटाफट करते हैं. There are total 6 boards. So if I'm reading this question for the first time, because in the exam what you see is going to be the first time for you. Okay, 6 boards. A, B, C, D, E, F. First pie chart given below shows the distribution of speed kilometer per hour. Those 6 boards, so these are the speeds. And the second pie chart gives below the distribution degree of upstream distance traveled by these 6 boards respectively. Sum of the speeds is 240 km per hour. So this total is 240 kilometers per hour. And this total is 750 kilometers. By all 6 boards, and upstream is 750 kilometers. So this is the data that is given. I don't see there is much required to be done. ये resolution वाला data नहीं है ना? Because there are a lot of values involved. I mean, say for example, what is the speed of A? So what will you do? So it is 75 degree. Total angle is 360 degree. So 75 divided by 360 into 240. So this is the speed of A. So वो आप calculate कर सकते हो. 122 times, 123 times, 375, 25 times. So 25 into 250. So speed of A is 50 km per hour. No need to do it for everyone. No need to do it. ये सिर्फ explain करने के लिए मैंने ऐसा बताया. Similarly, if I want to find the distance traveled by F, that is upstream distance by F. So 96. So 96 degree divided by 360 degree into total distance 750 kilometers. Okay? So 24 4 times and 24 15 times and 15 50 times. So 50 into 4 200 kilometers. So the distance traveled by F is 200 kilometers. Okay? Again, no need to do it for everyone. I just wanted to explain with the help of one value, one data, and we did that. ठीक है? दोबारा से एक बार सुन लो. Simple unitary method apply किया है. Simple unitary method apply किया है. क्या है logic इसके पीछे? अगर this entire thing is 360 degree. These are the angles for each one of them, and the total value is given 750. So 360 degree is equivalent to 750. 360 degree is equivalent to 750. तो 96 degree कितना होगा? 24 कितना होगा? 72, 96, 24, 48 कितना होगा? You can find each one of them, right? Similarly in this one, 360 degree is equivalent to 240 kilometers per hour. So you can find for each one of them. ठीक है? कैलकुलेशन इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड पकड़ के उसके हिसाब से आप आगे कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 90-30 वुड बी वेरी हेल्पफुल. 75 कर लिया तो 37.5 उसका हाफ हो जाएगा. 90 कर लिया तो उसका हाफ 45. 90 कर लिया तो उसका 1/3 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है? ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ रीड वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व. Read carefully and solve. एक काम करेंगे, 2-2 मिनट हर क्वेश्चन पे स्पेंड करेंगे. This question is an easy question. You have to trust in the fact that in CAT exam not every question is difficult. ठीक है? Your agenda should be, you should be able to catch the easier ones. ठीक है? चलो, take 1.5-2 minutes, try to solve this. लैंग्वेज लंबा होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यूजुअली लैंग्वेज लंबा होता है, उस बात को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है ना? फिर देखेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं. So read carefully. There may be different people involved. There may be different people involved in a question. Okay? So accordingly you have to put your effort.
ना इस तरह के क्वेश्चंस में मैं नॉर्मली ऐसा बोलता हूं दैट दिस इज अ काइंड ऑफ स्कैटर्ड डेटा. आप इस बात को समझो और ध्यान से समझने की कोशिश करो. स्कैटर्ड डेटा मतलब ऑलरेडी काफी छितराया हुआ वैल्यूज है, फैला हुआ वैल्यूज है, खुला हुआ है. ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज इन्वॉल्व हैं. इवन इन वन क्वेश्चन देयर आर 2 or 3 डिफरेंट वैल्यू दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम डेटा एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन. सो एक बात आप समझो, ऑलरेडी स्कैटर्ड डेटा है मतलब आपको ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, गलतियां होने के चांसेस ऑलरेडी काफी हाई है. So the quality of question has already become very high just because there are chances of making mistake is very high. ठीक. अब बारी आती है कैलकुलेशन की. More often than not, I mean almost always in such questions the calculation is very easy. Why? Because the number combinations will be very easy. ठीक है, ये बात आप दिमाग में बिठाओ और उसके हिसाब से काम करो. इससे क्या फायदा होगा? You can preempt the numbers. अगर कोई नंबर हमें कैलकुलेट करना है, कोई इक्वेशन बना, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय वैल्यूज को देख के डालने की कोशिश करो अपनी तरफ से. ये गेस नहीं है. प्रीएम्प्ट करना और गेस करने में फर्क होता है. गेस करने में क्या होता है, कोई प्रीमाइस नहीं होता, हम रैंडमली कुछ भी डालते हैं. प्रीएम्प्ट करने के पीछे ये सारी सोच है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. ठीक है, राइट. चलिए, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ. टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर इट्स अपस्ट्रीम डिस्टेंस. टाइम टेकन बाय बोट ए. सो दिस वाज speed, this was distance. A की बात कर रहे हैं. What is the distance for A? 48 degree divided by 360 degree into 750. So 48 divided by 360 into 750. 0, 0 cancel. 12, 4, 12, 3, 3, 25. So 100 kilometers. This is upstream distance. Speed of boat in still water. A. Speed. क्या होगा? 75. So 75 divided by 360, total is 240. Oh great. So this is 2 by 3 straight away. 3 cancels 25. 25 into 2, 50 kilometers per hour. ठीक. In upstream distance is 2.5 hours. Okay. So the time taken क्या होगा? 100 divided by. In upstream distance, in upstream the speed becomes B minus R. That is 2.5. B is the speed of boat in still water, R is the speed of river. So 100 divided by 50 minus R, that is 2.5, which is 5 by 2. Clearly 50 minus R is 40, R is equal to 10. This is what I am saying. This is what I am saying. कि जो वैल्यूज होंगे वो ऑलरेडी आसान होंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना और वो सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. 5 कैंसल्स 100 20 टाइम्स, 20 into 2 40, जैसे भी. So R equal to 10. R 10 आ गया. Now what is the question? Then what, A and C are traveling in the same river, then what is the difference between the total upstream distance and total downstream distance traveled by boat A in the same time in which boat C can travel 210 kilometers in downstream? आपको सिर्फ टाइम फाइंड करना है. ठीक है, क्या करने के लिए? In which boat C can travel 210 kilometer in downstream. ठीक है, so I'm just going to create some space here. इसको हटा देता हूं. Okay. The most important part of solving DILR questions is be peaceful at all points in time. Boat C 210 kilometers downstream. So C के लिए 210 किलोमीटर डिवाइड बाय C का बोट स्पीड प्लस रिवर स्पीड. ये टाइम कितना होगा? रिवर स्पीड वी ऑलरेडी नो इट इज 10. सो बोट स्पीड ऑफ C, स्पीड किस में था? इस वाले में. C कहां पे है? 90. 90 मतलब क्या होता है? 1/4. सो स्ट्रेट अवे 1/4 मतलब 240 का 1/4, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. सो 60 प्लस 10 70, 200 by 70, 3 hours. ठीक. Okay, now what is the question asking? A and C are traveling in the same direction. Then what is the difference between total upstream distance and total downstream distance traveled by boat A? So boat A, time is 3 hours into the downstream distance will be B plus R, time into speed minus 3 into B minus R. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो you don't have to do the entire calculation. अगर 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बनेगा? If 3 is common,
if 3 is common, b plus r minus b minus r. So b plus r minus b minus r will become b plus r. So what happens? B and b are cancelled. So it is 3 into 2r. That is 3 into 2, 6 into 10. That is 60 kilometers. Right? Okay. Chaliye, can we go to the next question? I'll wait for that time gap. फटाफट में से मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन करें. Can we move on to the next question? चलो बढ़िया. Let's go to the next one. So यही process हर बार हर question में करना होगा. Average distance traveled by boat ABC in upstream. Farid, very simple approach. Read the set. If it hits you what to be done, attempt it. Otherwise, leave it. And even if you have to leave all 4 sets, be free after 20 minutes. That's the simplest possible strategy. If at all it is a strategy. I'll explain that. Okay. Now here, find average distance traveled by ABC in upstream. So total is 750 kilometers. यहाँ पे ABC is 48, 24, 96. तो पहले पता है मैं क्या करूँगा? 48 plus 24 plus 96 ऐड करके divide by 3 into 360 कर दूंगा and then into 750 करूँगा. ठीक है? So पहले मैं angles का ही average निकाल लूँगा. First I'll find the average of the angles itself. बाद में उसको distance में convert कर दूंगा. ठीक है? So 48, 24, 96 चेक कर लो कितना बन जाएगा. 24 and 32, that is, so if you divide, this is 72, so 24, 32, so 56 divided by 360 into 750. जो भी value आए, that will be the answer. So 0 and 0 cancel, 4 cancels 36, 9 times, 4 cancels 56, 14 times, 3, 3, and this would be 25. So 25 into 14, 350 divided by 3. That is 116.67 kilometers. Now, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो. A lot of times it happens that some people are not able to solve a set. पूरा set नहीं solve होता. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे. उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. In DILR, it's one very important thing that I'm going to say now. A lot of people are not able to do any set completely. कोई बात नहीं. उस केस में आप लोगों के लिए क्या है? Do not try to solve the entire set. Okay, don't try to go for entire set, right? To go for entire set. ठीक, उसकी जगह आप क्या करो? Read the questions. Read the questions. ठीक है? For example, I'll compare this question and the previous question. Just read the language of the question and just a look at these options. Find average distance traveled by ABC in upstream, and the previous question was this one, time taken by A, this much, A and C. So there is a lot of complication. ठीक है ना? मतलब उसमें अंदर घुस के काफी काम करना होगा. Whereas in this one, we can get something directly from the set. है ना? From the original information, which we did. Right? So look for such questions in every set. एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा जरूर होता है हर एक सेट में जो इस तरह से हो, कभी कभी 2 भी होते हैं. सो द चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू सॉल्व और रिजॉल्व अ डेटा, फोकस ऑन सच 1 or 2 क्वेश्चंस. दैट्स द ओनली गेट अवे विद फ्रॉम दैट.
ठीक है, आप कोई मेथड या ऐसा कोई फॉर्मूला तो बना ही नहीं सकते कि उससे हो ही जाए, है ना. सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू कि इफ यू आर नॉट एबल टू, अच्छा देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट यू आर एबल टू डू वन सेट, उसके बाद बाकी के लिए आपका टाइम नहीं बचता है. सो फॉर दैट आल्सो द सेम प्रोसेस कैन बी अप्लाइड. Look for 1 or 2 questions from a set which is more general in language, smaller question which you can analyze faster. एनालाइज करने को ज्यादा है ही नहीं, एवरेज चाहिए, डायग्राम में मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, तो सॉल्व करो. इस तरह का एक एक दो दो क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हो अलग अलग सेट्स में. ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू रीच 6-7 क्वेश्चंस. ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन. Paxton, I have just answered your question. Let's look at the third question now. In such question you have to be really careful in reading. थोड़ा भी गलत हुआ सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा. अलग अलग बोट्स की बात हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन की बात हो रही है. There's a lot of confusion that is created, जबरदस्ती. B, D distance है, B नाम है, so you have to be really careful there. Yes, Ayush, it will help you to keep your mental peace intact because the whole point is about keeping the calm. दूसरा कुछ लॉजिक नहीं है, कोई और बड़ा स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल प्रोसेस और कुछ नहीं है उसके अंदर. Just be cool, comfortable, peaceful, keep reading it with the same intent and energy till the end of the paper. Give up बिना किए, एंड तक बिना सेट सॉल्व किए एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते जाना है. For those people who are not able to complete a full set. Good. शुभम समझ नहीं आया, अच्छा तो फिर वीडियो रिपीट कर लेना बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट द एंटायर थिंग, है ना. एंड दूसरा यू हैव टू बी फोकस्ड, अ लिटिल मोर फोकस्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट कैट. ओके, time taken by boat B to cover given upstream distance is same as the time taken by it to cover D kilometers in downstream. Okay, चलिए, सो अभी हम किसकी बात करेंगे, B की बात करेंगे. B बोट, ठीक है. B बोट का स्पीड कितना है, 37.5 डिवाइड बाई 360. 37.5 डिवाइड बाई 360 इंटू 240. वेरी गुड. सो 2 डिवाइड बाई 3, 75 बाई 3, that is 25 kilometer per hour. This is the speed. Distance कितना है, 24 by 360 into 750. जैसे मर्जी डिवाइड कर लो, 15 से कैंसिल होगा 50. So 50 kilometers. Now the question is saying time taken by boat B to cover upstream distance, given upstream distance, that is 50 kilometer, divide by speed of boat 25. And upstream it will be minus R. Time taken by it to cover D kilometers in downstream. So D divide by 25 plus R. तो ये एक रिलेशन है हमारे पास. This is one relation. Similarly, if time taken by boat B to cover D plus 15. So this is a different situation. D plus 15 divide by boat का speed 25 plus R. And that is equal to 3 hours. What is the time taken by boat B to cover D minus 15 kilometer in upstream? अब यहां से हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट. D अननोन है, D भी चाहिए, R भी चाहिए. अब इधर आपको पता है क्या करना चाहिए, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात. मैं वैल्यूज प्रीएम्प्ट करने की बात कर रहा था. If I say that R is going to be a multiple of 10, मल्टीपल ऑफ 10 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 3, इसमें से कौन सी बात आपको एक्सेप्ट हो पाएगी? आराम से सोच के जल्दी से बताओ. अगर मैं सिर्फ ये जो भी इक्वेशन है, जो भी ये इक्वेशन है, इनको देख के
क्या ये दिमाग में आ सकता है दैट r कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 10 और r कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और r कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 3? माय क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा, इनमें से भी कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा वैलिड होगा? क्या लॉजिक है वो छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं उसको खाली ध्यान से सुनो, फायदा ही होगा, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों बातें दिमाग में आ रही है क्या, या इनमें से कोई भी बात दिमाग में आ रही है क्या, या ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ यही वाला एक्सेप्टेबल हो सकता है, ये इसके चांसेस और इसके चांसेस कम लग रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो, जल्दी रिस्पॉन्ड करो भाई। कैन आई से कि इस तरह की कोई बात दिमाग में आ सकती है, और उसमें से कैन आई से ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, इसका तो चांसेस कम ही लग रहा है, इसके भी चांसेस कम ही लग रहे हैं? यस और नो, है ना? ये बात समझ आती है? इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो, राइट, वेरी गुड। सो अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो और इसके साथ इनफाइनाइट ऑप्शन हो, तो मैं पहले कौन सा चेक करूंगा? मैं पहले चेक करूंगा मल्टीपल ऑफ 5, बिकॉज 10 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है ना? बिकॉज ये 15 है, अगर ये 20-30 होता तो मैं शायद 10 का मल्टीपल अप्लाई करने की कोशिश कर सकता था, बट नीचे 25 है, तो 10 का मल्टीपल शायद उतना फायदेमंद नहीं लग रहा। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ठीक है, वेरी गुड। अगर आगे से, ये मैं पहले बता चुका हूं, ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैटर्ड डेटा, सो द कैलकुलेशन विल नॉट बी डिफिकल्ट, इसको भरोसा करो, कैलकुलेशन विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन हमेशा ना एक बैलेंस के साथ तैयार किया जाता है, एटलीस्ट कैट का, ठीक है? चलिए, सो मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आई कैन ट्राई 5, आई कैन ट्राई 15, आई कैन ट्राई 25। क्या करना है उसके लिए? पुट अ वैल्यू ऑफ r इन दी situations here and find d। अगर d दोनों जगह सेम आ गया तो वो चीज करेक्ट होगी, अगर d दोनों जगह सेम आ गया तो वो चीज करेक्ट होगी। चलो डाल दो। सो 20, if I put r equal to 5, I'll get d plus 15 divide by 30 equal to 3. So from here I get 90 minus 15, 75. इसमें मैं अगर r को 5 रखता हूं तो 50 divide by 25 minus 5, 20 equal to d divide by 25 plus 5, that is 30. So 0, 0, 2 से कैंसिल हुआ, 25 into 3, दोनों जगह से d equal to 75 आया। इसका क्या मतलब है? r equal to 5 is the correct value, ठीक है? अच्छा, अगर ये r equal to 5 सेट नहीं होता तो मैं कौन सा वैल्यू चेक करता? अगर r equal to 5 नहीं सेट होता, if r equal to 5 would not have given a good yield or a correct yield, then I would have checked r equal to 25, है ना? Then I would have checked r equal to 15 and so on and so forth. First I would have checked 25 because that is easier to see and उसके ही चांसेस ज्यादा होते। हमेशा इस बात का भरोसा करो कि ऑलरेडी स्कैटर्ड डेटा में वैल्यू इस्तेमाल हमेशा नॉर्मल वाला किया जाता है। अच्छा ठीक है, some people are saying 15, good, 15, 25, I would have checked 25 for that matter because here it is 25, so I would have first given a preference of 25, ठीक है, right? चलो ओके, 10 भी चेक कर सकते हैं बट उससे फिर वो आगे चलता जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। Always remember, one check, the chances of getting it given you right answer would be 90%, and second check में तो आ ही जाएगा। If you are thinking logically, then first check will give you your answer in 90% of the cases, which is really, really good situation, right? Khair, so now we have d equal to 75. Now we have d equal to 75, r equal to 5. Then whatever is the question, just answer it. What is the question? What is the time taken by boat B to cover d minus 15 kilometer? D minus 15 means 75 minus 15, which is 60 kilometers. 60 kilometers. I don't have space, so I'm going to remove all this. Okay? I'm going to remove all this. So d minus 15 is 60 divided by upstream. So b minus r, that is 25 minus 5, which is 60 divided by 20, and that is 3 hours. Option D. मैं बार बार यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं that if it is सौम्यजीत has given a very good statement, सब लोग उसका भी statement देखो, वो बोल रहे हैं 25 minus 25 0 हो जाएगा, so very good मुस्कान, so it can be, see this is what happens when you start thinking in the right direction, right? कि उससे क्या पता चला, लिमिट पता चला। तो मैं ये बोल रहा हूं, I am saying that even if I have to check all possibilities, I am really happy to see your comment, Muskan and Somijit. Even if I check all possibilities, in all I will have 4 numbers only, isn't it? 5, 20, 15, sorry, 5, 10, 15, 20. Why? Because R has to be less than 25. So even if I have to check all possibilities, I'll have to check only these 4.
right? And the numbers, whatever I see integers or with 0.5 or with 0.5 or integers. So इनके अलावा कोई होने की possibility वैसे भी नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इन बातों पे बिलीव करें कि अच्छा ऐसा हो जाता है, वैल्यू डाल के चेक करने से हो जाता है, उस पे बिलीव करिए, ठीक है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक अप द फोर्थ क्वेश्चन. देखो जरा, read the question carefully. Yes, somebody said that you took the person D. हाँ, वो गलतियां होती रहती है, ठीक है? You have to be really careful about that, ठीक है? I'm not able to correct Farid, and in worst case 10 and 20 also, so maximum 4 checks, but still all those values are very, very simple. ठीक है, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. बी केयरफुल, किस बंदे की बात हो रही है? हु इज द, somebody said speak in English. अच्छा, is it fine now? Because see, most of this, Darshan, are you able to understand? I assure you that you will not miss out on anything, okay? You will not miss out on anything. If I am speaking in Hindi, I would have spoken that in English also, okay? All right. Chalo, let's look at the question now. What is the total time taken by boat F? We are talking about F. Be very careful. The given distance in upstream and D plus 60 kilometers in downstream. So what do we have to find? F. What is the distance? F distance is 82.5, speed. 82.5 divided by 360 into 240. So 240 2 times 3 times. So 82.5 is to 2 is 165. Divided by 3 is 55 kilometer per hour. And this is the speed of F. What is the distance of F? Distance of F. 96. Divide by 360 into 750. So 24, 4 times 24, 15 times. 15 cancel 750, 50 times. So that is 200 kilometers. 200 kilometers. Okay. So distance 200 kilometers, speed 55. You know, the moment I see 55, I feel really happy about it. All the options are integers. पक्का जो होगा स्पीड ना, वो या तो 5 किलोमीटर होगा रिवर का स्पीड, या फिर 20 होगा, या 15 का भी चांस नहीं, 15 भी हो सकता है. करेक्ट, 15 हो सकता है. करेक्ट, राइट. लेट्स ट्राई. गिवन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड D plus 60 kilometers in downstream. If time taken by boat A to cover the given distance upstream is same time taken to cover by the boat A. Okay, ये A की बात हो रही है. Time taken by boat A to cover the given distance. A हमने किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी. How much was it? 75 into 2, 150 by 3, 50 kilometers per hour, and the distance was 48. 2 by, so A distance for A is 48 by 360 into 750. So 24 2, 24 15. And this is 50. So 50 into 200 kilometers. So A का जो time है, that is 100 kilometers, divide by speed of A 75 by 360 into 240, which is 2 by 3. So 50. आगे क्या है इसमें? Downstream, the time taken by A to cover the distance in upstream. So 50 minus R. As the time taken by boat F to cover D plus 50. और इसमें speed of F लेना है, ध्यान रखना. You have to take the speed of F. So D plus 50 divided by speed of F, that is 55, and downstream. So 55 plus R.
Yes. Yeah, so now it is confirmed that r equal to 5 is not going to help because the values are all integers. So I'll directly check r equal to 15. Do you understand that? Now I'll directly check r equal to 15. So if I put r equal to 15, I see this becomes 100 divided by 50 minus 15 is 40, and that is d plus 50 divided by 70. Does that work? Oh, that is another thing. Given that boat B can cover d kilometer in still water in 6 hours. अरे तो d पहले ही मिल गया, ठीक है, तो ये guess करने की जरूरत नहीं है. We have already got the value of d. We don't need to guess. ठीक है. So the distance traveled by B. What is the speed of B? Speed of B is 24. So A का half. नहीं, speed here. So A का speed जो भी था, A का speed कितना था? That was 50 kilometers per hour. 50 kilometers per hour. So B ka speed will be half of 50, that is 25 kilometers per hour. Okay. So 25 into 6. Very good. So this becomes, am I making any mistake anywhere? It is also given that boat B can cover d kilometers. So d is equal to speed of B, that is 25 into 6, that is 150 kilometers. 150, हाँ ठीक है. So if I put d equal to 150, so 150 plus 50, 200, divide by 55 plus r. Divide by 55 plus r. Is there any trouble in that? मैंने सबका वैल्यू ठीक से लिया ना? What is the total time taken by boat F to go the given distance in upstream, d plus 60 kilometers, downstream, if time taken by boat A to cover the given distance in upstream is same. So 100 is the distance for A, 48 by 362 into 50, that is 100 kilometers. ठीक है? And the speed of A is 75 into 150 by 3, that is 50, minus R. A in upstream, this is the time taken by A, and D plus 50 in downstream. And F का speed कितना है? F का speed हमने निकाल रखा है 55, correct? So 55 plus R. And also it says the boat B can cover d kilometers in still water in 6 hours. ठीक? So boat B can cover d kilometers, that is 25 speed. A का half speed हो जाएगा. So A का speed is not half. Right. We have not calculated the speed of D correctly. Okay. We have not correctly calculated the speed of D. I am sorry. वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा था. So speed of D 45. We can calculate that. 45 by 360 into, how much is that? 45 by 360 into 240. So 2 by 3, 90 by 3, that is 30 kilometers per hour. ठीक है? But still it will not match. There is some trouble with the values, I think, here. Anyways, so the distance traveled by B is 30 into 6, which is 180 kilometers. So 180 and 50. ठीक है, तो इंटीजर तो नहीं आ रहा फिर, है ना? D plus 50 in downstream. It's also given that boat B covers d kilometer in still water in 6 hours. 30 into 6. नहीं, ये नहीं आ रहा. मतलब यहाँ पे शायद मैंने टाइपिंग में कुछ गलत किया है, because I remember. अरे यार, सॉरी. मैंने भी वही गलती कर दी. I also made the same mistake. I took it for D. Okay, चलो बढ़िया. So I have, ये गलत कर दिया मैंने. क्यों गलत किया? मैं इसको रहने देता हूँ, मैं डिलीट नहीं करता हूँ. What did I do? I took the person D. Yes, I took the person D. So that was fine.
25 into 6, that is 150 kilometers. ठीक है, so 150 kilometers, this would be 150 plus 50, that is 200 divide by 55 plus r. But फिर ये match नहीं हो रहा है ना, it is not matching, it is not matching because ये 100 है, ये 200 है, so 1 2 55 plus r is equal to 2 into 50 is 100 minus 2r. So 3r is equal to 45. नहीं ठीक है, so r is equal to 15. R is equal to 15. Is that correct? Yeah, that is correct. ये 35 हो जाता और ये 70 हो जाता. Perfect. ठीक है, so r equal to 15 आ गया. Now do whatever you want. What is the question? The total time taken by boat F to go to given distance in upstream. So F का distance कितना था वैसे? F का distance upstream was 200 only. Okay, so 200 divide by F का speed कितना है? F का distance is given distance in upstream, that is 200 kilometers, divide by B minus R. So this will be 55 minus 15 plus. दूसरा क्या बनेगा? Time taken by and distance D plus 60 in downstream. So D plus 60 would be 210 divided by 55 plus 15. So this is 5 hours and this is 3 hours. 5 plus 3, that is 8 hours. ठीक. So you have to be a little careful about, yes, right, F speed is 55. F speed is 55. Right, so you have to be really careful about your mistakes. उसके लिए एक ही तरीका है, slowly पढ़िए और उसके हिसाब से calculate करिए. ठीक है? So the answer should be 8 hours. Can we move on to the next question? Correct. Right, set easy है but data confusing है, बिल्कुल सही बात. चलो, now let's take this set. This is based on Venn diagram. I want you to draw the diagram and put the values as much as possible in it. If you remember, 4 सेट का है ये. 4 सेट में हम कैसे ड्रॉ करते हैं? We draw a box of 3 by 3 like this. Then we join these 2 points and these 2 points and these 2 points and these 2 points. ये है ना? Yeah. So we have 4 languages: French, German, Spanish, Greek. Okay, French, German, Spanish, Greek. So in this, just put the values. Arna, so it was a long question, okay? So you will have to go through the video again. And बीच में मैंने एक calculation mistake भी किया था, ठीक है? So अगर मैं अभी repeat करूँगा तो it will take another 10 minutes. So better ये है जो session खत्म होने के बाद go through the last question. Process is exactly the same as it was in the earlier questions, ठीक है? Now this one, the question based on Venn diagram for 4 sets. Have you done a question on 4 set earlier? Okay, okay. ठीक है. I'll explain putting the values in detail. Don't worry. Just make sure that you have read every word of the statements given on the screen properly. ठीक है. अच्छा, मैंने ये करवाया था. Okay.
ऑल राइट, सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेट इंफॉर्मेशन सारा यहाँ पे भी कर दिया मैंने, एंड वी हैव स्पेस. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग एंड पुटिंग द वैल्यूज. ओके, सो फर्स्ट वी ड्रॉ this table and we simply start putting the values in this as mentioned in the language of the question. ठीक है, French, German, Spanish and Greek. Okay, 120 students study French, so this entire set of French is 120 total. The number of students studying only French, only German, only Spanish and only Greek is 23, 14, 21, 18. So 23, 14, 21, 18. ठीक है? Now, the number of students studying French, German and Spanish is 20. एक बार ना पूरा पढ़ लेता हूं मैं, ठीक है? Spanish, Greek and German is 26. Oh, so basically तीन का set बोल रहा है. The number of students studying French, German and set is 24. The number of students studying French, Spanish and Greek is 27. Good. The number of students studying French and German is 50. And the number of students studying, okay, French and German is 50. French and German is 50. वो कहाँ पे आएगा? So French and German is this total, right? This is 50. So I'm writing it at the corner there. क्योंकि वो पूरे के intersection की बात हो रही है. So I have written it there at the corner because it is talking about the intersection of entire French and German. The number of students studying Spanish and Greek is 55. So Spanish and Greek, that means we are talking about this entire thing. So I'll write 55 here. Then after that, the number of students studying exactly two languages are all equal except for those who study only French and German, and those who study only Spanish and Greek. French and German, only French and German is this, only Spanish and Greek in this. So these two are different. These two are different. What are the other places for exactly two? Other places for exactly two is this one, this one, this one and this one, right? Exactly two. This is exactly French and Spanish. This is only Greek and Spanish. This is only, sorry, German and Spanish. This is only Greek and Spanish. And this is only French and Greek. So these four are equal. These two are not equal to them and they are different. ठीक है? ओके, चलिए अब क्या करेंगे? जो हमें आता है हम वही करेंगे. हमें क्या आता है? हमें वेरिएबल डालना आता है, डाल दो. Now that we have read the entire thing, I know that these four values I'll take as A. And these two values, let's say B and B. Right? Now what are we not aware about? This point, this area is the intersection of exactly three: French, Greek and Spanish. This area is Spanish, Greek and German. This area is French, German and Greek. Only वाला area, only three वाला, exactly three वाला area है. तो मैं उनका भी एक नाम दे देता हूँ, X, Y, Z, T. And this portion is M, which is what? It is intersection of all four. Now I can write these informations. है ना? अब मैं ये वाला इस्तेमाल कर सकता हूं. ठीक है? यहां तक. चलिए, let's see one by one. The number of students studying French, German and Spanish. French, German, this entire thing. Out of that, Spanish is only this thing. Do we notice that? ठीक है? तो एक बार वो आइडेंटिफाई कर लें. अगर आप ध्यान से देखो तो फिर अगला वाला जो इंफॉर्मेशन है, इट इज अबाउट दिस वन. अगला वाला इंफॉर्मेशन इज अबाउट दिस वन एंड द नेक्स्ट वाला इंफॉर्मेशन इज अबाउट दिस वन. ठीक है ना? सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दैट एंड आई जस्ट राइट द वैल्यूज देयर. Okay, now what are the values given? Look at that closely. I'm not going to write the equation separately. Can we do that here itself? Yes, वो मैंने गलती से B लिख दिया. I written
आई हैव रिटन बाय मिस्टेक. ठीक है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. ओके, नहीं, दे मे बी इक्वल बट वी डोंट नो, हमें पहले से नहीं पता होगा. ठीक है, ऑल राइट. नाउ look at it carefully. French, German and Spanish is 20. French, German and Spanish. So x plus m, that is 20. X plus m, that is 20. So instead of x, I'll write 20 minus m. और मैं वहां से x को हटा रहा हूं. Okay. उसके बाद number of students studying German, Spanish, Greek is 26. German, Spanish, Greek. Spanish, Greek are these two. Out of the German is y plus a. Sorry. German, Spanish and Greek. German, Spanish and Greek. Spanish, Greek is this. Out of that German is m plus y. ठीक है? So m plus y. M plus y. That entire thing is 26. German, Spanish, Greek. That is 26. तो y की जगह I'll write 26 minus m. So what I'm trying to do is I'm trying to express x, y, z, t in terms of m. ठीक है, अगला वाला. Number of students studying French, German and Greek. French, German, that is an entire thing, and Greek, that is m plus z. So m plus z, that is 24. So z is 24 minus m. अच्छा, अब इस बात को समझो. इफ यू while reading the question, if you could put it in the gram, nothing like it. While reading the question, if you can put the values directly on the graph, there is nothing like it. मैं जिस तरह से अभी बोल रहा हूं, अगर आपने भी एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरह से पढ़ना और एनालाइज करना कर दिया अगर एग्जाम में, तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. दिस इज एग्जैक्टली द कामनेस दैट यू नीड. ठीक है, आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. ठीक है, चलिए अब आगे. फ्रेंच, स्पैनिश एंड ग्रीक इज 27. फ्रेंच, स्पैनिश एंड ग्रीक इज 27. देख लो, फ्रेंच, स्पैनिश एंड ग्रीक. सो स्पैनिश ग्रीक ये पूरा, स्पैनिश ग्रीक ये पूरा, स्पैनिश ग्रीक ये पूरा. आउट ऑफ दैट फ्रेंच इज टी प्लस एम. सो समबडी वाज आस्किंग, इसलिए मैंने दोबारा बोल दिया. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो. सो टी प्लस एम, दैट इज 27. So t will be 27 minus m. So I'll remove t and I'll write 27 minus m. अच्छा, वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसा डाल पाना ना, ये नहीं हो पाता है. ठीक है, ये नहीं हो पाता है. So that is usually not possible. It's very difficult to do that. Okay? चलो अब. So what we have done is we have expressed a lot of values in terms of m. है ना? Right. Now I can express a also in terms of m. How come? देखो जरा ध्यान से. The sum of these values should be equal to 70. Listen very carefully. This entire thing is 50. This entire thing is 50. Please look at the screen. This entire thing is 50. That is given in the question. ठीक है? That means the sum of these things is 70. Am I right? So use it. If you use that, you will be able to find A. So I'll write that relation. अगर लगे जरा भी लगे ना कि गलती हो सकता है, लिख के करो properly. ठीक है? A plus A, 2A plus 23 plus 27 minus M, that should be equal to 70. 23 plus 27, 50. 70 minus 50 is 20. So 2a minus m is equal to 20. Wow. So 2a is equal to m plus 20. So a is equal to m by 2 plus 10. अच्छा. So a is equal to m by 2 plus 10. अब मैं जहां जहां a है वहां से a हटा रहा हूं. And I simply write m by 2 plus 10. m by 2 plus
10, m by 2 plus 10, m by 2 plus 10, m by 2 plus 10. Right, so now we are left with B and C. So I think now we can do anything that we want, है ना? B and C, वो दोनों आसानी से निकल जाएंगे. The sum of all these should be 50. First you add these, 20 plus 24, 44, m, cancel, 44 minus m plus b is equal to 50. 44 minus m plus b is equal to 50. So minus m plus b is equal to 6. So b is equal to m plus 6. B is equal to m plus 6. B is equal to m plus 6. And finally C, sum of these values is 55. Sum of these values is 55. Add karo. 27 plus 26. 27 plus 26. 53, m and m cancelled. एक m रह गया. So 53 minus m plus c is equal to 55. ठीक है? Now, so m minus m plus c is equal to 2. So c is equal to m plus 2. जो लोग स्मार्टनेस फील कर रहे हैं अपने अंदर, अगर वो ये चीजें मेंटली कर सकते हैं तो वेरी गुड, बट आफ्टर थॉट नहीं आने देना. ठीक है? डोंट लेट द आफ्टर थॉट कम. अरे ये तो ऐसे ही हो जाता, तो अगर ऐसे ही हो जाता तो ऐसे कर लो. ठीक है? डो नेवर लेट द ईगो थिंग कम. ठीक, किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे. एंड ये ऐसे हो जाता, ये वाला स्टेटमेंट नहीं आने देना. क्यों? अगर हो जाता तो कर लो, कर लो और अपना स्कोर बढ़ाओ. ठीक है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, हाउ 70 एंड हाउ दीज थिंग्स यू रियली नीड टू पे अटेंशन. I have explained that very, very clearly. Okay, you have to understand that you are talking about something which is really good. That means you cannot be very relaxed. Relaxed mentally होना है, attention में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए. This total is 120, this is 50, and जिस तरह से मैंने explain किया है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, then it is really going to be very, very difficult for anyone and everyone. है ना? Correct me if I am wrong. So this was 50, this total is 120, so all these totals should be 120 minus 50, that is 70. Okay? Okay, so we have these values now. So what is the benefit here? Each of the values is presented in terms of one unknown. Now we have only one unknown. If there was one information, we could have found the value of m also, but it is not, no problem. Question किससे related हो सकता है? चलो preempt करते हैं. Question can be related to maximum or minimum of something. There is only one unknown. Looking at this diagram, even before going to the question, is there anything that you can say about m? Because now everything is dependent on m. Everything is dependent on m. My question is there anything that you can say about m? Is there anything that you can say about m? ध्यान से देखो, पूरे को ध्यान से देखो. Is there anything that you can say about m? Is there anything that you can say about m? Correct, that's a good observation. M has to be even number because m by 2 है. M has to be less than 20 because number of people can never be negative. M has to be less than or equal to 20. The maximum value of m, that is 20. It cannot be more than 20 because if it is more than 20, then 20 minus m will become negative. M minus 20 has to be positive. ठीक है? So out of all 4 situations, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 20. तो उससे बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है? It cannot be more than 20. All right, let's go to the questions. चलिए देखते हैं question. What are the questions? What can be the maximum number of students who study only French and Greek? Only French and Greek. Chalo, I'll give you a couple of minutes because you have not seen the question. We have resolved the data. You have
Made your notes, so just solve all these 5 questions. फटाफट जल्दी से कर लो, हो जाएगा अब तो. क्या करोगे? You can see that all of them can be directly related to m. तो m को छोटा या बड़ा कर सकते हो. We understand very clearly that m is less than equal to 20 and the lowest m can be 0, m cannot be negative. So for one condition take 0 and for the other condition take 20, everything is going to lie in between. अरे वाह, कितना बढ़िया डायग्राम बन गया. So m lowest value is 0, m largest value is 20. Everything else is connected to m. ठीक है, very good, very good. चलो चारों क्वेश्चन कर लो, चारों क्वेश्चन कर लो. Very good. Let's see. So, what can be the maximum number of students who study only French and Greek? Only French and Greek. Only French and Greek, right? Only French and Greek. French and Greek, ये पूरा. French and Greek, ये पूरा. Only French and Greek is this, m plus 6. So, m plus 6. Now what is it asking? Maximum number of students who study only French and Greek. What mistake did I do? Did I make any mistake? Only French and Greek, that can be maximum. M has to be less than 20. M has to be less than 20. Did we make any mistake? Only French and अच्छा, मैंने French and German कर दिया. I am sorry. I did French and German. Yeah, I get it. I am sorry. अच्छा, ये B हमने नहीं, C नहीं निकाला था क्या? C, हाँ, m plus 2. Okay, French and Greek. French and Greek. Please pay attention everyone. कई बार इसमें तकलीफ होती है, साथ में होता है तो आसान है, अलग अलग है तो फिर कैसे देखोगे? ध्यान से देखना. French and Greek. Do you see this is entire French and Greek? नहीं, इसमें स्पेनिश भी है. This is Spanish also. French and Greek only. French, ये कैसे हो रहा है? French and Greek only. The question is maximum number of French and Greek. Okay, so French and, okay, I'm so sorry यार, मैं कुछ और ही देख रहा था. French and Greek. Where is the number that is French and Greek? ये वाला. Only French and Greek, right? This is the part of only French and Greek, not a part of German, not a part of Spanish. So m by 2 plus 10. Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah, मैंने जर्मनी ले लिया. ठीक है, मिल गया मुझे. Sorry. So m by 2 plus 10. So m by 2 plus 10. m की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेंज 0 to 20. क्या पुट करना चाहिए? 20 पुट करना चाहिए. 20 by 2 plus 10, that is 20. So the maximum number would be 20. What can be the maximum number of students who study only Greek and Spanish? Only Greek and Spanish. Only Greek and Spanish. Only Greek and Spanish, that is m plus 2. Wow. Only Greek and Spanish, m plus 2. M plus 2. And I need maximum. So maximum m 20. So 22. Right? So everything will be done very easily now. If in all 14 students study only German and Greek, then how many students study French, Spanish and Greek but not German? So first of all, only German and Greek. Only German and Greek. Where is only German and Greek? Only German and Greek is this one. M by 2 plus 10. M by 2 plus 10. That is 14. So 14 minus 10 is 4. M is equal to 8. If m is equal to 8, then what do we want? How many students study French, Spanish, Greek but not German? French, Spanish, Greek but not German. French, Spanish, Greek but not German. That is
फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक बट नॉट जर्मन. कौन सा है? ये वाला, राइट? फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक बट नॉट जर्मन. 27 माइनस m. ठीक है? So 27 minus m, which is 27 minus 8, which is 19, option D. All right. Last one. What is the maximum possible number of students in the academy? Maximum possible number of students in the academy. देखो. Now ये ऐड करने के लिए आपको ये सारे ऐड करने हैं, बट उसमें मैं एक छोटा सा थोड़ा सा बेटर तरीका बता दूं. ध्यान से देखो. This already is 120. दिस ऑलरेडी इज 120, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? दिस ऑलरेडी इज 120, सो यू डोंट नीड टू ऐड इट. प्लस दीज आर सिंपल नंबर्स 21, 14, 35 एंड 18, 53. I repeat, 14, 21 and 18. These are already simple numbers. ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करो. सो माइनस m प्लस m विल बी कैंसल्ड. सो 26 प्लस 2, 28. एंड फाइनली इन दोनों को ऐड करो. दैट विल बिकम m by 2 प्लस m by 2, m प्लस 10, 10, 20. Okay, so our answer should be 120 plus 53, that is 173, plus 28, 201, 221. So m plus 221. So answer of the question should be m plus 221. M plus 221. What do I need? Maximum. So maximum m is 20 plus 221, which is 241. ठीक है. Now यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, that is you should not put the values before addition. पहले नहीं करना. ठीक है. Why? Because you need to know what kind of structure we are going to get. Are we going to get 221 plus m or 221 minus m? ये जब तक नहीं पता चलेगा, you cannot put the values, right? Because if this is the situation, then m will be the maximum value for the total to be maximum. And if this is the situation, then m will be minimum for the total to be maximum. So please be very careful about that. I repeat once more, listen carefully. You need to get to the final situation and identify the relation between the total and m. The total and m. I am saying, ये आया, अगर ये वाला है तो क्या होगा? m maximum होगा तो total maximum होगा. लेकिन अगर ये आता, negative m के साथ आता तो क्या होता? If m is smallest, then total will be largest. So just be careful about this process. ठीक है? Anyway, so here it was 221 plus m. Correct. So it is 241. Okay. चलिए. So we have done two sets. Now this is an easy set. देखो क्या कर सकते हो? This is an easy set. Just take 1.5 minutes to read it. Then I'll show you the questions. All these questions that a lot of people ask, you know, I can see a couple of questions कि 3 सेट के लिए कैसे सॉल्व करना है, 40 मिनट में 2 सेट कैसे सॉल्व करें. These questions are stopping you from doing exactly what you want to do. मैं रिपीट कर देता हूँ. इस तरह के जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, यही सबसे बड़ा बैरियर है आपके लिए. ठीक है? This is the biggest trouble. So anybody who is asking, looking for a method, that what could be the method of attempting LRDI section? What is the method of doing 3 sets in LRDI section? What is the method of doing 2 sections in LRDI section? What is the method of doing 15 questions in LRDI section? इस तरह के जो questions हैं, they are stopping you from doing. क्यों? All the sets are going to be new. All the languages are going to be new in the exam. The decision of choosing a set has to be totally based on what kind of language is there and what kind of language you are comfortable. ठीक है? इस तरह से आपको वो सोचना है. 3 सेट के लिए
कैसे सॉल्व करना है? 3 सेट तो आसान होता है आर्यन, 3 सेट नहीं, मैं तो DILR के रिलेटेड क्वेरी भी हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 3 सेट में तो जैसा अभी आएगा 3 सेट वाला एक 3 सेट वाला अभी आएगा, ठीक है। चलो लेट्स सी। सो प्लीज फोकस ऑन द openness of mind during the exam. Do not go with a preset dialogue. ऐसा होगा तो ये करूंगा, वैसा होगा तो ये करूंगा, और वहां पहुंचे और पता चला 100 मीटर का रेस है, ठीक है। सो डू नॉट go with any preset mindset. That is the biggest trouble that you can create for yourself. Go read the set carefully, look at the questions. Depending upon your preparation, you will come to know what I can do first. ठीक है ना? This is an easy set. I'll just show you a question. So next slide में, yeah, these are the questions. ठीक है? One second. So this one is an easy set, right? You can see that some of the values you can calculate, some of the values you will not be able to calculate. So don't worry about that. If you are able to identify different possibilities, identify that and let it be there. ठीक है. चलो सॉल्व करें. Should we start solving? Correct. It is a distribution trouble and it's an easy question because काफ़ी कुछ उसमें clear करके दिया है. There is a lot of clarity that has been given. Let's see. In November 2023, IMD organized an inter-college event where 420 students from 4 different colleges, IIM A, B, C, D, participated in 4 different events: quiz, case competition, Sudoku and chess. Each student participated in exactly one event. The following details are also known about the events. The number of students who participated in the quiz is exactly half of the number of students who participated in each of the other 3 events. So quiz, wow. So ये तो पहले ही आ गया. There are 4 total events. And quiz event is exactly half of the number of students who participated in each of the other 3 events. That means that the other 3 events will be exactly same number, so that the quiz will become half of each of them. So if I am taking quiz event total number as x, then the total number for case competition can be taken as 2x, or should be taken as 2x, the next one 2x and the next one 2x. So the overall total becomes 7x and that has to be 420. So x will be 60. This 2x will be 120, 120, 120. So for quiz, the total number of aspirants is 60, for case 120, for Sudoku 120 and chess 120. ये पहले ही सबसे पहले क्लियर हो गया. ठीक है. उसके बाद no student from IIM A participated in the quiz event except that at least 20 students from every college including IIM A participated in each event. It is known that at most 60, wow. So at least 20 and at most 60. तो 3 ही possibilities बचे, 20, 40, 60. That means any event, any college, the number of students can be either 20 or 40 or 60. Great. Also the number of students who participated in any event, yeah, right, a multiple of 20. So either 20 or 40 or 60. तो ये तो सारा clear हो गया. ठीक है.
Read the first statement. Number of quiz event is exactly half of the number of students who participated in each of the other 3 events. So अगर हमने quiz को x लिया, वो half होना चाहिए किसी का, तो each of the others will become 2x, 2x, 2x. 2x का half x होता है, ठीक है? Now comes the D and E part. If there had been 20 fewer students who are from IMC, then the number of students from IMB would have been twice as many as each of the other 3 colleges. Now this is very interesting. It says, if there had been 20 fewer students from IMC, then the number of students from IMB would have been twice as many as each of the other. So it's already half of the, double of the others. For example, I am A, B, C, D. Listen very carefully. IMB is twice of already A and D. IMB is already twice of A and D. So if A is Y, D has to be Y and B should be 2Y. Now come back to this. If there had been 20 fewer students who are from IMC, 20 fewer students from IMC, then the number of students from IMB would have been twice as many as each of the other colleges. तो अगर IMC में सपोज करो Z होता तो क्या रिलेशन होना चाहिए? रिलेशन क्या होना चाहिए? Z minus 20 इसका twice is equal to 2y. Have I written it correctly? Please check. Yeah. 2y, that is IMB should be equal to 2 times IMC minus 20. This is what this statement says. Right? Correct? दोबारा से देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, दोबारा. If there had been 20 fewer students who are from IMC, मतलब अगर IMC में 20 कम बच्चे होते तो IMB जो है would have been twice of the other 3 colleges. So IMB C में 20 कम करने के बाद twice होता, but बाकियों का तो twice already है ना. IMB is twice of the others already, right? So this is, if I have taken A and D as Y, then B should be 2y. And according to that statement, IMC minus 20, उसका twice भी 2y होना चाहिए. So basically, Z will become y plus 20. ठीक है? So I'll remove Z from there. I'll remove all these things. So basically, ये चीजें आप सिर्फ reading से कर सकते हो. So this is y plus 20. And this total should also be 420. Now how much is this total? Y, 2y, y. So 5y plus 20, that is equal to 420. So y is equal to 80. Fantastic. So this is 80, this is 160, this is 100 and this is 80. Oh, so we have got college-wise total number and we have got the group-wise or the event-wise total numbers. Perfect. Exactly 40 students from IMC participated in the Sudoku event. ठीक, right? चलिए, so just understand this part कि अगर IMC में 20 बच्चे कम होते तो IMB उसका डबल और बाकियों का भी डबल होता. ओ तो चेंज सिर्फ C में करना है, वो A और D का तो ऑलरेडी डबल है ही, बस इतनी सी बात. बेसिकली अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. English translation, whatever I have read, I have explained. Rest, you will have to do it on your own. ठीक है? There is no mathematics involved in this. There is no mathematics involved in this. It says IMC, then the number of students of IMB would have been twice as many as each of the other. So सिर्फ C में 20 कम करने की जरूरत पड़ रही है, बाकी A और D का तो twice already होगा ही. That's what it means. Anyways, चलिए, let's draw the table. So I'll draw the table here. I am A, B, C, D. Okay. Then the events. What are the events? The events are quiz, case, Sudoku, chess. Quiz, case,
Sudoku and chess. Right? ABCD total, we already know that. ABCD total is 80, 160, 180. 80, 160, 180. Acha. Quiz, case, Sudoku, chess, that also we already know. 60, 120, 120, 120. Right. 60, 120, 120, 120. Then also we know about sum of the values. A few of them. What are the few of them? Number of students who participated in the quiz event is exactly half. No student from IMA participated in quiz. No student participated in quiz from IMA. Quiz IMA 0. Wow. You see, the minimum of each of these places, has to be 20 and the maximum can be 60. Minimum of each of these places has to be 20 and the maximum can be 60. और यहाँ पे 3 places बचे हुए हैं और total 60 है. So what does that mean? Minimum of each place has to be 20 and there are 3 places, total is 60. So this has to be 20, 20, 20. Okay. What else? Exactly 40 students from IMC participate in Sudoku. So Sudoku IMC is 40. Sudoku IMC is 40. Wow. This is also clear now. 20 and 40 is 60 and total is 100 and these two have to be minimum 20. So no option. They have to be 20 and 20 each. ये 40 दिया हुआ है, ये 20 आ गया, 40 and 20 60. Sum of these two is 40 and they have to be minimum 20. So the only way it is possible is 20, 20. ठीक है? चलिए, very good. Very nice. Now what? Is there anything else that we can do? IMA हो गया, known हो गया. Colleges multiple of 20, if there have been 20 fewer. 40 from IMC participated. That's it. This is all that we have. Okay. Is there anything else that we can do? Let's check that. Chess A. This is 80. This is 80. This is 80. This is also 80. Oh, for this 80, there is no option. This has to be 20, 20, 20. इस 80 के लिए तो ये करने से पहले भी हम बोल सकते थे. For this 80, there are 4 parts and each one of them minimum has to be 20. So the only way is 20, 20, 20. Right? ठीक है? So ये भी हो गया. Now for this entire part, we cannot be sure. ठीक है? No problem. What we'll do is we'll write all possible options. You see this 20 plus 20, that is 40. So sum of these two has to be 80. So I can write it as, if I take this as 20, this will be 60. If I take this as 40, then this will be 40. If I take this as 60, then this will be 20, right? Same goes with the next one, same goes, and so, okay. So this is 40 and 20. 40 and 20 is 60. 40 and 20 is 60. So how do we take it? This is one way of writing it, but this has lot of possibilities. दूसरे तरीके से देखो, ये नहीं लेके, you know, if you take this one, this will give you lesser possibilities. Look at that carefully. For this to be 80, ये तीनों एक साथ में cover हो जाएंगे. कैसे? This can be 20, 20, 40. This is one case. Or it can be 20, 40. एक काम करता हूँ, मैं color और change करके लिखता हूँ so that you can focus on that. It can be 20, 40 and 20. And the third case can be 40, 20 and 20. Do you see that? Because इधर 2 ही set final हो रहे थे, इधर 3 set final हो रहे हैं, 3 boxes final हो रहे हैं. So the better is to take the one which gives you possibility for filling more boxes. ठीक है? Now again,
Now here the total sum is constant. If this is 20, 20 and this is 20, then this has to be 60. If this is 20, 40, 20, then this has to be 40. You see that? ये blue वाले सब एक साथ लेना चाहिए या लिए जाएंगे. 20, 20, 40. So this has to be 40. Check. Now, if I take 20, so 20, 20, 20, that is again 60. You know, I'm taking the green one. If it is 40, 40, 40, 80 and 20, 100, so this is 20. 20, 20, 20, 60, so this has to be 60. Right? And the third possibility. If I take this as 40, 40, 40, 80, so this is 40. If I take this as 20, 20, 20, 40 and 40, 80, so this has to be 40. Right? And if I take this as 20, then 60, then this has to be 60. Now hold on, abhi ye khatam nahi hua. Kyun khatam nahi hua? Because the total has to be 160 and this total has to be 80. तो इससे तो हमने शुरू किया था. There is only one thing to be checked. There is only one more thing to be checked. ये वाला अभी तक check नहीं हुआ. Check कर लो. Is it happening properly? 40 plus 40 plus 60, that is 160 plus 20. 40 plus 40, oh sorry, 40 plus 40, 80 and 60, 140 plus 20, 160, right. So this 20 is valid. This blue color is valid. 60 and 20, 80 and 60, 140 and 20. This is also valid. 40, 40, 60, that is 140 and 20, right. So that is also valid. So all the cases that are there on the board right now, they are valid. ठीक है? Are we together? ये कलर अलग अलग करने का पर्पस ये था कि आप ये ध्यान से देखो that if you are considering that first value, then all the blue values will be considered there. If you consider that green wala, so anywhere you take green wala, you have to take all of them only green wala. Right? So there are three different possibilities. Right? चलिए, let's look at the questions now. यही कर लो पहले. For how many event college combinations can we uniquely determine the number of students who participate in that category? For how many for how many combinations can we uniquely determine the number of students who participated in that category? ठीक है, देख लो. So obviously जो यहाँ पे multiple possibilities है, that is not clear. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 of them. Right? See, this is another thing. This also sometimes creates a trouble. For example, I see a comment which says won't blink an eye to skip the set. ठीक है? This is not going to help you because numerically it is an easy set. It is very easy for me to draw three tables and put all the three possibilities separately. इससे easy question actually होगा नहीं. इससे easy question actually नहीं होगा because 60, 80, 160 अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल आएगी. ऐसा है. ठीक है ना? So instead of क्या बोलते हैं उसको, हवा में रहने के बजाय ज़मीन पे आके, and I speak the truth always. So this is one of those questions कि ये तो करना ही चाहिए, है ना? There is another way to say this कि भाई इसका टोटल कितना होगा, 80 होगा, इसका टोटल कितना होगा, 40 plus 20, 60 होगा, इसका टोटल कितना होगा, 40, 80 होगा. So I've just given you a way to put it on paper. Because a lot of times it happens that mentally it is slightly difficult to hold the things. तो smart बिल्कुल नहीं बनना है. ठीक है? You have to know your mind कि कब वो स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है और उसी समय उसको रोक देना है. बिकॉज उससे तो कैट नहीं होगा, दैट इज वेरी क्लियर. उल्टा इट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस, है ना? जितना ग्राउंडेड रह के तमीज से अच्छे से सीखेंगे करेंगे उतना फायदेमंद होगा. ये वाला सेट अगर छोड़ दिया तो फिर करोगे क्या, ये सोचना. हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है? अगर ये वाला सेट भी छोड़ दिया तो फिर शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे. राइट? चलिए, लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चंस. Find the odd one out. Now this is one problematic question.
ऑड वन आउट. देखो सेट को देखो और मुझे बताओ व्हाट कम्स टू योर माइंड. विल डिस्कस ऑल पॉसिबिलिटी दैट कम्स टू योर माइंड. ओके चिल्ड्रन, find the odd one out. Look at this and tell me, out of the institutions A, B, C, D, which one do you find odd? Which one do you find odd? I can see two reasons. आपके पास कोई reason हो रहा है क्या? Okay, a lot of people are saying I am Ahmedabad. Obviously because of the presence of zero, है ना? Zero की वजह से शायद आप बोल रहे हैं. Because of that zero, isn't it? Now here there are two possible answers, because here there are two possible answers. It will be either IIM A or IIM D, right? Here because of presence of a zero, and here all equal. Now this is a very difficult situation to handle. ठीक है? Equal, all equal. Okay, so answer will be both. दोनों होना चाहिए, दोनों में से. अब वो दोनों में से अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, एग्जामिनर ने कौन सा लॉजिक लगा के सॉल्व किया है, यू विल नॉट कम टू नो ड्यूरिंग द एग्जाम. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, you will not be able to know what logic the examiner has applied. Now ये इसका क्या मतलब हुआ, every 2-3 years there may be one question like this where it is slightly open-ended. Be ready for that. While writing the exam you will not come to know. ठीक है, वो आपको नहीं पता चलेगा, right? So if I think normally, अगर मैं क्या करता मैं आपको बता देता हूं, I would have marked IIM A, but the source that I have taken this from, there the answer was IIM D. अब ये problematic है, इसमें आर्ग्यू भी नहीं कर सकते. उस वक्त पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्या था, you have to just guess कि वो कौन सा रहा होगा. इससे ज्यादा आप कुछ और दिमाग नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, right? Now अगर एक ही चीज मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट समटाइम्स इट हैपेंस, बट इट हैपेंस लाइक एवरी 2-3-4 years. एक बार कभी ऐसा एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, हमेशा नहीं होगा. हमेशा सी डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू नो कि वो लॉजिक दूसरा वाला लगा रहा है ना. समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि एक जीरो तो सिर्फ IIM A में ही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज ओनली वन थिंग, सो वेयर IIM A इज देयर. सो ये चीज एक ऐसी है जिसका कोई भी आंसर नहीं कर सकता. ठीक है, नोविनल परहैप्स यू मिस्ड द मेन पॉइंट अगेन. जजमेंट मत करो. ठीक है, बेटर टू स्किप. ऐसे सब बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए. आई एम सेइंग all these comments that anyone is getting in mind right now, this is after all of this discussion ना. जब आप पहली बार वो क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे होंगे तब आप ये सब कोई सोच नहीं पाओगे. I don't know whether you can sense that or not, because when you are solving the question, आपने सॉल्व कर लिया, देखा और आंसर मार्क किया और आगे गए ना. ये इतनी सारी बात, इतना एनालिसिस वहां हो नहीं रहा होगा. आई होप दैट मेक्स सेंस. ठीक है, सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं जज नहीं करना है, जजमेंटल नहीं होना है ना. एंड या सो बी रेडी फॉर दैट थिंग. वो उस वक्त के आपके मेंटल फ्रेम में वो कैसे आ रहा है, यू डोंट नो दैट, राइट? सो डोंट बी प्री डिसाइड करके नहीं जाना. IIM C नहीं था यार पॉसिबल. ठीक है, दो ही रीजन थे, एक तो जीरो का प्रेजेंस और दूसरा ऑल इक्वल. दूसरा कोई रीजन दिखा नहीं कहीं पे. चलिए एनीवेज, 10th क्वेश्चन. 10th question. It is known that the number of IIM B students who participated in class is 60. Oh, so IIM B is chess. IIM B chess 60. IIM B chess 60. IIM B chess 60. Green वाला, all green वाला. तो अगर आपके पास जो बहुत इंटेलिजेंट किसी ने कमेंट मारा था कि एग्जाम में हमारे पास एक ही कलर का पेन होगा, यही सब मैं बोलता हूं ना, ये इस तरह के स्मार्टनेस आप लेके जाओगे ना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी. डोंट डू दैट. ठीक है, ओके. यू वुड नो कि दैट फर्स्ट वाले सारे वैल्यूज एक साथ, सेकंड वाले सारे वैल्यूज एक साथ, थर्ड वाले सारे वैल्यूज एक साथ. ठीक है, सो कंट्रोल योर रैंडम स्मार्टनेस एंड यूज बेसिक, वेरी बेसिक लॉजिक. फाइंड अ वे टू डू दैट. ठीक है ना.
find a way to do that कि ठीक है, if I don't have the different color pens, what else can I do? So I'll keep in mind कि first values they go together, second values go together, third values. अगर ये कमेंट किया होता ना तो आपकी सादगी, आपकी बेटर सिंप्लिसिटी दिखती और वो फायदेमंद भी होती. Anyways, it would be beneficial for you. So just keep that in mind. Right? चलिए, so ये 60 है. Question क्या था? What was the question? How many students from IMA participated in chess? So A, chess, right? अरे, so IMB is 60, IMA chess would be 20. Perfect. All right. Now this reminds me another thing. Now hold on. अभी सुनो, अभी एक और बात सुनो. This tells us another thing that did I need to write all of them in advance, or I could have done it like this, 20 and 20 40. ये दोनों का टोटल 80, तो अगर ये x है तो ये 80 माइनस x होगा. अगर ये y है 40 and 20 60, this total should also be 60, so ये 60 माइनस y होगा. This is another way to look at it. ठीक है. अगर ये z है तो 20 20 40 and 80 माइनस z. बट वो सारी चीजें है ना जो पहले दिमाग में है वो करना है, आफ्टर थॉट्स के ऊपर ज्यादा सेंटी नहीं होना है. ठीक है. If it is known that the number of IMB students who participated in chess is 60, then how many students from IMA participated in Sudoku? ठीक है. So 60 in chess, IMB 60 is chess, then IMA Sudoku. 60 in chess, 60 in chess, then IMA in Sudoku. Okay. How do we go about that? I'm A in chess. Do we get that? Question क्या था? I'm A participated in Sudoku. See, if this is 60, then this is 20, this is 60, right? Similarly, this is 20, this is 40, this is 20. क्या होना चाहिए? 20 ही होगा. हाँ, this is a problem. This is a problem. You see, if this is 20, you know, here there is another 20, you know, for that this can be 40 or 20 both. That is the problem, right? ये थोड़ा interesting बन गया. ये थोड़ा सा interesting बना because there is a 20 value here and there is a 20 value here also. ठीक है? क्योंकि ये 60 दोनों थे ना. So if I take this 60, then according to that 40. If I take this 60, then according to that 20. So 40 and 20 both. Right. चलिए बढ़िया. So ये फायदा हो गया हमको सारे possibilities लिखने का. So it will be either 20 or 40 and hence type 0 if it cannot be determined. So 0. ठीक. 12th question. Which of the following is definitely false? Which of the following is definitely false? 40 students each from IIM A, B participated in case. A and B, 40 both, case. A and B, A and B. 40 both हो भी सकता है और 40 both नहीं भी हो सकता है. ठीक है. So this is maybe. अच्छा, 40 from each A and B participated in chess. A and B, 40-40 possible and may not be possible. Okay. So maybe. Third, 20 from each of A and B participated in Sudoku. 20 from each of A and B. Sudoku, 20 from each. 20-40. Oh, this is not possible at all because the total of this has to be 60, right? So total अगर 60 है तो 20-20 possible ही नहीं है. Definitely false. So this is definitely false. This is the answer. Definitely false. Definitely false. Okay. 20 and 60 students from A and B participated in chess respectively. 20 and 60, A and B chess. Chess 20 and 60, 20-60, 20-60. Oh, 40-40 भी तो है ना. So there is a possibility 40-40 also. So that may be possible. हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. Hence the answer of that would be C. This is maybe. Maybe. All right. चलिए आगे बढ़े. Can we move on to the next set?
Yes? चलिए, let's take this one. First, you just create the table, see what you can do. Create the table, read the question carefully. Okay. Somebody asked till what time we are going to do. So we are on the fourth set. We have just started with the fourth set and we have total of 5 sets. So accordingly we should be able to finish by 6 at max. So this is the fourth set. After this, one more set. This is going to be a little tricky. The question is small but slightly tricky. The last one is calculation based, so we'll focus on that a little more. तो basically detail में ही करेंगे. अगर मैं कर रहा हूँ तो we'll do it in detail only, है ना? Rest is on you. Yes, Jeevan, I got that. There are 2 60s in IMB. Okay, so you will not be able to find all values clearly, okay? But at least whatever can be found, mention it in your table clearly. Mention it in your table clearly, okay? How to determine which 2 sets are the easy sets? You will not be able to decide before it. You will be able to check, you will be able to do something only after reading it. ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है? Do not go with any statement in your mind कि ऐसा होगा तो वैसा करूँगा. मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? I can give you guarantee of one thing, definitely. आप 2000 लॉजिक भी लिख के लेके जाओगे ना या सोच के लेके जाओगे ना कि ऐसा होगा तो ये करूंगा, ऐसा होगा तो ये करूंगा, और वहां 2000 के बाहर वाला लॉजिक आएगा, ठीक है? सो प्लीज डू नॉट गो विद अ प्रिपेयर्ड माइंडसेट कि ऐसा होगा तो ये करूंगा. नहीं कर सकते, मत करो. इट विल क्रिएट अ ट्रबल. रादर देन दैट, बी हैप्पी दैट यू आर देयर इन द सेकेंड सेक्शन. सेकेंड सेक्शन होगा LRDI का. बी हैप्पी दैट यू गॉट अ चांस टू रीड द क्वेश्चंस. रीड देम हैप्पीली. After reading all the 4 sets maybe, or if you are reading the first set and you are getting to know कि सब ये हो जाएगा तो solve करो. Otherwise, read all the sets very comfortably, carefully. See, एक और बात समझो, अगर read करके आपको नहीं आ रहा, मतलब already हालत बहुत खराब है ना? चारों सेट पढ़ लिया और कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब already situation खराब है. बट ऐसा होगा नहीं. Mostly everyone is able to do one set, so do that set, है ना? Instead of getting into a discussion or thought process, the set that you come across, say first set देखा नहीं आया, दूसरा देखा ऐसा लग रहा है कि इसको कर सकते हैं तो करो. 15 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, लगने दो. Then for the third and fourth set, use that logic that I explained in the beginning. क्या बताया था?
that look for the questions first. Look at the language of the question and see if there is one question or two questions that can be done without getting into the details of the information of the set. Try that, try doing that, so that is good enough. If you are already able to do 2 sets, तो फिर तो ये सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. Okay, so these are the questions. Okay, just take a look. If you get any idea, then I'll explain the data. My speed is not improving. Don't try to improve the speed. ये सब ना बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, लोगों को समझना चाहिए. ठीक है, वो नॉर्मली क्या होता है ना, किसी से पूछते हैं तो कोई भयंकर लॉजिक बताने की कोशिश करता है कि ऐसा करो चमत्कार हो जाएगा. नहीं होगा. हाँ, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होगा. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दैट इफ यू आर एबल टू डू वन सेट, ओके, एंड इफ यू आर एबल टू डू एटलीस्ट 4 out of those 5 questions in the set, please be happy about it. Make sure that you try to do it in 20-25 minutes out of 40 minutes, and in the last 10-15 minutes just try to do a couple of questions from the other sets, because this is the reality, this is the truth, this is exactly how it is going to happen. ठीक है ना? Depending upon your comfort, your reaction to the set when you read it first, you will be able to get a few more questions. So be happy and make sure कि एक सेट तो हो ही जाए, है ना? जो मैं बार बार बोलता हूँ, कल की पोस्ट भी लिखी थी मैंने, उसमें यही बोला था that whatever knowledge you have, make sure कि वो 100% आप एग्जाम में लेके जा पाओ. ठीक है? Whatever ability you have, if you have the ability of doing one set, go in the exam of making sure कि वो ability of one set तो हो, उधर भी utilize हो, पता चला वहाँ एक भी set नहीं हो रहा, वैसा नौबत ना आए. Okay? So if you are able to do one set, first be happy about it. Second, let it happen on that day. Depending upon the set, you will be able to do something about that. ठीक है? Alright, चले ये करें. Arjun distributed 15,000 among his 3 sons equally, right? Is that equally? Is that equally distributed among his 3 sons equally, right? Equally, okay. So Balu, Daniel and Firoz. Balu, Daniel and Firoz. First day, second day. This is another issue, another thing that you have to be very particular about. In the exam, you don't get tools. All this drawing that I am doing, deliberately I am doing it on the screen so that you understand that you have to do that in the exam on your own. Okay? Here, food and entertainment. Here, food and entertainment. ठीक है, चलिए बढ़िया. Now 15,000, so 5,000, 5,000, 5,000. So these are the total values that we have got. Now each day, each of them spent some positive integral multiple of 25. So minimum 25 rupees for each one, each event, everything. Food entertainment at the carnival. Balu spent 35% of his amount on first day. So 35% of 5,000, 35% of 5,000, how much is that? 35% of 5,000 is 1750, right? So 1750 is the total. मतलब इसका और इसका sum is 1750. That's why I have written the in between. Now if that is 1750, then this one, this total has to be 3250. Okay. While Firoz spent 44.5% of his amount on the first day. 44.5% of 5,000. Calculate carefully. That would become 445 into 5. 2225. Then this will become 2775. Very good. Daniel spent 68% of his amount on entertainment. Daniel entertainment, मतलब ये वाला और ये वाला. Okay, we'll go back to that later.
While Firoz spent 64% of money on food, the three sons together spent 39.83% on first day. Okay, 39.83% calculate karo. Now this is tricky. 39.83% is supposed to be calculated like this. It is 39 5 by 6%, 0.833. Always remember, it is given to use like 5 by 6. Okay? So 3956, that will become how much? 240. 239 by 600 into 5,000. 15,000, sorry. So this cancel 25 times and this is 5975. So first day total is 5975. Out of that, if I remove these two, 1750 and 2225, how much is that? 3975. 3975. Out of that, if I 5975 में से 3975 subtract कर दो तो कितना बनेगा? 2000. Okay. So Firoz first day is 2000. So Firoz second day should be 3000. Okay, is it clear till now? क्या है? The three sons together spent 39.83% on the first day. Three sons together spent 39.83% on the first day. Right? अच्छा ये ऊपर है, हाँ ठीक है, I got that. Don't worry. ठीक है, उतना परेशान नहीं होते, है ना? Thank you for correction. क्या था? 2275. This is 2000. This is 3000. And this would be 2775, right? Chalo. Yes, is it clear till now? ठीक है. Okay. Now, acha. So first day total is 5975. So second day total will be how much? Second day total will be 15,000. If necessary, we can do that. 15,000 minus 6,000, 9,025. So this is 9025. Is that happening correctly? 3 और 3 6 और 2 8,000, 750 250 9,005 25. Correct. All that is absolutely fine. What else can we do? Now we are left with this information. Daniel spent 68% of his amount on entertainment, while Firoz spent 64% of his money on food. Okay. Daniel spent 68% of his amount on entertainment. Let's do one thing. Let's write the values like this. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. ठीक है. So a few things which are very clearly visible. A plus B is 1750. E plus F is 2000. I plus J is 2275. C plus D is 3250. G plus H is 3000. K plus L is 2775. ठीक है यहाँ तक? Right? Okay. Then Daniel 68% of his amount on entertainment. Daniel entertainment is F and H. F and H. So I am writing here F plus H is 3400. F plus H is 3400. Right? That means E plus G has to be 1600. Is that correct? F plus H
is 3400, then E plus G has to be 1600 clearly, right? F plus H, E plus G. बढ़िया, very good. चलिए आगे देखते हैं. Firoz spent 64% of money on food. Firoz spent 64% of money on food. I plus K. I plus K. That is 3200. Okay. So J plus L. J plus L should be equal to 1800. Very good. So Firoz का भी हो गया. Perfect. दूसरा एक और चीज है, while they spent 40% on the 2 days combined. 40% means 6,000. So total of food is 6,000. Total of food on 2 days is 6,000. ठीक है ना? Total of food is 6,000. You see, E plus G is 1600. J plus L, I plus K is 3200. So 32 and 16, 4800. That is the total food expenditure of Daniel and Firoz. I repeat, E plus G is the food expenditure of Daniel. I plus K is the food expenditure of Firoz. So ये total हो गया 3200 plus 1600, that is 4800. And total expenditure on food, अच्छा ये food था ना, 40% on food, right? This was food. Okay. So total food of these 2 days together, total food should be 6,000. So if that is 6,000, then A plus C should be 1200. Then B plus D should be 5,000 minus 1200, that is 3,800. So I think whatever we could do, we have done it. जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया. Whatever we have with us now. ठीक है? Let's look at the questions. First question, if Balu spent minimum possible amount on entertainment on the second day, minimum entertainment second day Balu. Second day entertainment, that is D. What are the information that we have? Let me go to the, that place directly. Second day entertainment, C plus D. So involving D, what are the information that we have? C plus D is 3250. C plus D, please watch it very carefully. बहुत सुंदर question है ये. We have B plus D, that is 3,800. What do we want to find? Spend on entertainment on day 1. Entertainment on day 1, that is B. B से related क्या information है हमारे पास? We have A plus B is 1750. A plus B is 1750. Yeah, that's it. And A plus C is 1200. So this is all the information that we have. We want B to be minimum. Minimum कौन सा वाला चाहिए? D. D should be minimum. ठीक है? D should be minimum. And we want B to be maximum. आपको पता है क्या करना है? इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? Whatever you do, in the end you check whether it is valid for all 4 of them or not. For example, if you use 2 of them or 3 of them, ठीक है? अरे यार कर लो ना चेंज. चलो ठीक है. 2225. जस्ट चेक करो इफ दैट इज फाइन. क्या वो ठीक है? चलिए लेट्स सी. वैलिडिटी चेक करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ ऑल द इक्वेशंस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल,
if I want B to be maximum, B is here and here. मैं कहीं से भी शुरू करूं, it should be valid for all of them. If I start from here, I can take A minimum. Now minimum value of A will be 25. 25. From there I get C equal to 1175. From here I get B equal to 1725. ठीक है? Go ahead and check for the others. If I put C equal to 1175 in this, 1175, ठीक है? So 1175, D will be equal to how much? 12, 2075. Now put 2075 here and 1725 here. Does it give us 3800 or not? Because बाकी तीन तो हमने इस्तेमाल कर लिया ना. This is very, very important to understand. You can choose any three to start with. You can choose any equation to start with. That is not important. Important क्या है? लास्ट में किसी एक इक्वेशन पे जाके आपको फाइनल वैलिडिटी चेक करना है. वो यही होना चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी. मैं वापस वही बोल रहा हूं. रैंडमली कहीं से भी शुरू करते, एंड में एक इक्वेशन में वो अगर वैलिड सही होता तो ही वो करेक्ट सिचुएशन होता. यानी बी मैक्सिमम इज 1725. दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सिचुएशन. ठीक है? ऑब्वियसली कीप द क्वेश्चन इन माइंड. हर सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. क्वेश्चन है ना दैट व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट ऑन डे 1. ठीक है? इट इज गिवन दैट डी इज मिनिमम. सो डी मिनिमाइज करने के लिए, बिकॉज बी एंड डी आर टुगेदर, डी मिनिमाइज करने के लिए बी को मैक्सिमाइज करना है. सो कहीं और से शुरू किया. No, that very clearly means if anybody is asking about A, why 25, I'll answer that. But that means that you also need to work a little more on your focus part. ठीक है ना? Because that means you did not read the question. You did not note down. So उसमें दो चीजें हैं. एक focus issue है. Focus issue इसलिए है क्योंकि आप methods ढूंढते रहते हो या strategy ढूंढते रहते हो या so called चीजें कि ऐसा करेंगे. उस सब चक्करों में मत पड़ो. Please read with focus. That is one very, very important point, really crucial point. दूसरा, please make notes, short notes in your notebook when you read the question. चमत्कार नहीं होगा, है ना? कंप्यूटर में से आवाज नहीं आएगी, right? कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और the computer is telling you, oh wait, ये करना है, wait, ऐसा है, ऐसे सब आवाज नहीं आएगी. ठीक है? Very short notes. Either you write very short notes or do the calculation on the paper then and there when you are reading the set on the computer. Complete the calculation there, then and there itself. So basically आप read नहीं कर रहे हो. My point is you are not at all reading the question if you are missing the crucial information. I mean ऐसे क्या पढ़ा होगा, किसी ने भी ऐसा क्या पढ़ा होगा कि each day one of them spent some positive integral multiple of 25, कि ये मिस हो जाए. ठीक है? अच्छा, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये शायद सबसे जरूरी चीज है. There are two important things. One important thing is that you reach the CAT center on the day of the exam, and the second important thing is read. Just read. बाकी सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है ना. और सम ऑफ यू आर आस्किंग कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और वो सब. पहला स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चन वेरी, वेरी केयरफुली. ऑलराइट, आई होप आई हैव आंसर्ड दैट. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट दैट फिरोज कुड हैव स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट ऑन डे 1? फिरोज एंटरटेनमेंट डे 1, सेम प्रोसेस. दिस इज अ रियल कैट लेवल क्वेश्चन. ठीक है? बिकॉज कैट में ना, आई मीन दिस हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिस्टेक एवरीवेयर. ठीक है? चलिए, सो इट सेज फिरोज एंटरटेनमेंट डे 1, फिरोज एंटरटेनमेंट डे 1, फिरोज एंटरटेनमेंट डे 1 इज जे. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव फॉर जे? जे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब ले लो, फिरोज या जे से रिलेटेड. सो जे प्लस एल इज 1800. J plus L
is 1800, J plus L is equal to 1800, I plus K is 3200, I plus K is 3200. What other information do we have? I plus J is 2225, I plus J is 2225, and दूसरा है K plus L is 2775, K plus L is 2775. Now here one important point, whenever you are doing on the paper, try and make sure that you do it a little more clearly ताकि आप वापस जाके values ढूंढ सको. See, for me it's very easy to get all these things typed and come in the class, but उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, मैं कितना भी इसको रंगीन बना के पहले से टाइप करके डिजाइन दार टेबल बना के लेके आऊं, that is not going to help you. ठीक है, because what is going to help you is what you do on paper with your own hands, so that structure builds up in your mind that this is exactly how we should go. So अब इस तरह से थोड़ा क्लियर रखेंगे तो क्या होगा, तो जगह का इस्तेमाल सही तरीके से करना है. That's the whole idea. Now, could have spent maximum possible amount that Firoz could have spent on entertainment day 1. So entertainment day 1 is J. So I want the maximum value of J. So question क्या बन गया? Question बन गया maximum value of J. कहीं से भी शुरू कर लो. Start anywhere that you can. यहीं से ले लेते हैं. Because I want the maximum. So I start with a lower value wherever J is. So I will start either with this equation or with this equation. What is the reason? J is there, इसलिए. Out of these two, I must start with this one because this is a lower value. So this will give the maximum limit. उसमें भी L, if I want J to be maximum, L will be minimum. Then what? Then you have to check validity. 1775. Check the validity. If L is 25, K will be 2750. Is that okay? Yes. If J is 1725 and here K is 2750, I will be 450. This is 450. Did I make any mistake? 2750, 1725, 2225. 2750, 450, 2175 हो रहा है, 2255 नहीं हो रहा. It is not coming out to be valid. क्या problem हो गई? कुछ गड़बड़ हुई क्या? Is there any mistake that has happened? 49, 5000. That is correct. If I take L as 25, I plus J is not coming out to be 2225. Oh, yes. गलत लिखा मैंने. गलत लिखा. सही है वो. 1775. So is it valid? Yes, all valid. So all valid means maximum value 1775. Always remember, इसमें जो गलती होगी वो validity ना होने की वजह से ही होगी. Correct. What is the maximum possible amount that Daniel could have spent on? ये तो सारे एक जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना. All these questions are exactly maximum possible amount of Daniel food day 2. Daniel food day 2. चलो ये मैं टेबल पे करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्ट. Daniel food day 2. That means we want G max. G max. Which one should I start? 1600. 1600. Oh, अच्छा वो तो एक ही है. I'll write one more equation of G plus H. G plus H is 3000 and दूसरा F plus H, E plus F, E plus F, that is 2000. So I'll start with the smaller one. ठीक है? 1575, 25, E 25, 25, 1975. कौन सा वाला? F, F 1975. ठीक? G 1575. Then H will be 16, 1425. Now validity इससे आ जाएगा 1975, 1425. Does that happen to be 3400? Perfect, correct. So maximum value of G can be 1575. 1575 is the answer, right? So it can be really fast, है ना? It can be really fast if you follow the basic process only.
What is the combined amount spent on Daniel on day 1 and 2 and day 1 and Firoz on day 2? Day 1, Firoz on day 2. ये कौन सा वाला question है? Do you understand this? Not much into, so this question can be given a preference. Because इसमें अंदर घुस के बहुत काम नहीं करना है, हालांकि थोड़ा बहुत फिर भी करना है, बट अगर बेसिक कैलकुलेशन कर दिया तो ये एक क्वेश्चन जो है with the set and this question can be done in first 5-6 minutes only, right? I hope you can see that. So Daniel day 1, Firoz day 2. Daniel day 1 2000, Firoz day 2 2775, so 4775. तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो बिना पूरा सेट या हर क्वेश्चन करने से पहले, so if I am doing this question as the second set of mine or the third set of mine, perhaps I look at the questions first, ठीक है, एंड ये क्वेश्चन देख के मुझे मोटिवेशन आएगा कि अच्छा मैं डे का पूरा अगर निकाल लूं without getting into the food and entertainment, without getting into this, if I am able to find the whole day expenditure, I'll be able to answer this question. That's what I'm saying. ठीक है? Now, who among the three sons has the possibility to spend the maximum amount on food on day 1? Maximum food day 1. Maximum food day 1. I think this is very easy to do it now. Maximum food day 1. So A, it cannot be more than 1725. Let's change the color. So it cannot be more than 1725. This cannot be more than 1975. And this cannot be more than 2200. ओके, सो कौन सा मैक्सिमम हो सकता है? बड़ा क्लियरली दिख रहा है ना? 1725, 1975, 2200 कैन बी द मैक्सिमम, राइट? 20, ओ इवन नॉट दैट, वो भी नहीं हो सकता. क्या गलत हुआ इसमें? गलत नहीं हुआ. 1725 बिकॉज ऑफ दिस एंड 1200 से 1175, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड. सी here, because of 2000, this E cannot be more than 1975, and because of 1600, okay, it cannot be more than 1575. Nice. So, highest value here 1175, highest value here 1575. ठीक है? Okay, and because of this 1800, I है ना? नहीं, not I plus J is 222. हाँ ठीक है, and इसकी वजह से आता 3175. So obviously 2200. So this 2200 can be the maximum. ठीक है? डे का टोटल में वैलिडिटी की जरूरत नहीं है ना, डे का टोटल तो फिक्स्ड है. द टोटल ऑफ द डे इज फिक्स्ड, राइट? सो वी डोंट नीड टू चेक एनीथिंग देयर. Okay, so who can be the maximum? The last one, Firoz. Option C can be the answer. So now we have one more set, and that is really going to be a गुड सेट. ठीक है, तो मैं आपको उस पर पहले इंफॉर्मेशन देता हूं. टेक अ डीप ब्रेथ, ट्राई एंड सॉल्व व्हाट यू कैन डू. सो क्वेश्चंस विल कम वन बाय वन. चलो, हियर I'll ask like this. I'll give a question like this. Find length and speed of each train. So I want you to give at least 8 minutes to this and focus on answering this. Find the length and speed of each train. Length and speed of each train. ठीक है? Question is based on the very basic concept of ratios and a little bit of trains concept. Read carefully, try and see what you can do. I'll just be back, okay? This question is going to be long. तो इसके
distracted very easily. They entertain the ideas and the thoughts whenever they appear in their mind. आवाज नहीं आ रही है फिर से? दोबारा स्टार्ट हो गई? वेट अ सेकेंड, मुझे सब सुनाई दे रहा है, माइक फिर से कनेक्ट हो गया था शायद. या चलो लेट्स स्टार्ट विद. ओके, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू जस्ट कंफर्म वंस? कैन यू जस्ट कंफर्म वंस? आर यू एबल टू हियर माई वॉइस? ऑल गुड? डिड यू हियर जो प्रवचन दिया मैंने अभी पिछले 5 मिनट में, वो प्रवचन सुना आपने? ऑल गुड, ठीक. ओके, आई होप यू टेक अवे समथिंग फ्रॉम देयर. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ज्ञान तो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं. All right, so we start from here. Everyone, please pay attention. Start from here. Here we are talking about the ratio of length and speeds. Okay. So A and B is 3:2. So what we do is we say length and we say speed and we say A, B, C, D, E, F. Whatever information we can take out from that, we should take out. ठीक है? Ratio helps us to use a variable there. Now here, length of A and B 3:2. So A and B is 3:2. So 3x, 2x. Length of A and E. A and E is 1:2. A and E. So A already 3x. So E will be 6x. Right? A is to B is 3:2. So we have taken 3x and 2x. अगर ये 1 का 3 किया तो 2 का 6 हो जाएगा. Is there anything that we can say about C, D, F? No, not at this stage. Speeds. Speed of A and B is 4:5. So 4y, 5y. And speed of DEF 463. DEF 463, but that is a different ratio. So 4Z, 6Z, 3Z. ठीक है? अलग अलग कर दिया सबको? Okay. Right? Now read these information and see, जो चीजें हम लेके कर सकते हैं करेंगे. Train A can cross a tunnel of length 120. Train and tunnel. So train A का length, that is 3x, plus tunnel of length 120, divide by speed of A 4y, that is equal to same time as train F can cross a person standing on the platform. So I need the length of platform? No. I only need the person, only need the length of the train. Person is a point, whether he's standing on platform or on moon, doesn't matter. Person के लिए सिर्फ length of train. So length of train F, we don't know it, इसलिए मैंने सीधे यही लिख दिया. Divide by speed of F. Speed of F is known, 3z. Right? Now, train F can cross a tunnel double its length in 45 seconds. F and tunnel. Length of F plus the tunnel 2 times length of F, divide by speed of F, that is equal to 45. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं. Whatever is given in the question, ठीक है? Right? अच्छा. Now, length of F plus 2 times length of F, क्या बन गया ये? 3 times length of F divide by speed of F, that is 45. So this is this gives us 3 cancels 45 15 times. 3 cancels 45 15 times. Okay.
So we have length of f upon 3z that is equal to 15. अच्छा, आप बोलोगे आप ये 3 क्यों नहीं कैंसिल किया? वो इसलिए क्योंकि यहां पे वी हैव LF अपॉन 3z, सो दिस इज इक्वल टू 15. अब सवाल ये उठता है क्या ये मेंटली कर सकते हो आप? ये आपकी प्रॉब्लम है. आई वुड हैव डन इट मेंटली. कैसे? देखो, ट्रेन एंड डबल द लेंथ, सो 3 times द लेंथ, 3 times द लेंथ इन 45 seconds, so 1 time द लेंथ 15 seconds. ठीक है? इफ यू कैन हैंडल, डू इट इन दी एयर. हवा में करने की कोशिश करो. नहीं हो रहा है हैंडल, कोई बात नहीं, आराम से कर लो. नथिंग टू वरी अबाउट इट. ठीक है? वेरी गुड. So as of now, I know the length of train F from here is 15 into 3, 45Z. तो एक चीज तो मैं यहां पे डाल दूं. पॉइंट ये है कि जो जो वैल्यूज मुझे मिलता जाए मैं वहां डालता जाऊं. दूसरा, if you use this one, 3x plus 120 upon 4y equal to 15. 3x plus 120 upon 4y is equal to 15. क्या बन रहा है वो? देखो, 3x plus 120 is equal to 4y into 15, that is 60y. 3 से डिवाइड करो, it is x plus 120 is equal to, sorry, 3 से डिवाइड किया तो it is x plus 40. x plus 40 is equal to 20y. So as of now I don't see anything else happening. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया. अच्छा, you need to understand that in the class when I am explaining I deliberately go very slow. I hope that is fine, है ना? Okay, next one. Time taken by train D to cross a tunnel of length 140 meter. Train D, do we have any information? No. ठीक है, कोई बात नहीं. So length of D divide by the speed of D, that is 4z, but उसमें length of वो भी होगा ना? हाँ, tunnel 140. So length of D plus 140 divide by the speed of train D, that is equal to twice the time taken by the same train to cross a pole. So 2 times. Now to cross the pole, length of D divide by 4z. Now can you do this mentally? You should have. ठीक है, ये भी कर सकते थे, डायरेक्टली मेंटली हो सकता था. Twice the time its own length and equal to own length plus tunnel length. That means the tunnel and the own length is equal. Clearly दिख रहा है ये. 4z cancel. LD plus 140 is 2 into LD. So length of train D is 140. Very good. So this is 140 meter. जो जो वैल्यू पता चल रहा है वहां हम डालते जाएं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This is done. Train C can cross a pole in twice the time taken by train E to cross a pole. ठीक है, और आगे there is another thing. The speed of train E is 20% more than the speed of train C. Wow. E and C 20% more. Speed of E, speed of C 20% more means 120 is to 100, that is 6 is to 5. And speed of E is 6z. Wow. So this should be 5z. Am I right? अगर वो 6z है तो दूसरा 5z बन जाएगा. So speed of C is 5z. Is that clear? ठीक है यहां तक? ओके, चलिए बढ़िया. अभी भी ये मिसिंग है और इनका आपस का रिलेशन मिसिंग है. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. हाँ, बट यहां पे देयर वाज इंफॉर्मेशन दैट ट्रेन सी कैन क्रॉस अ पोल इन ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ई टू क्रॉस अ पोल. सो लेंथ ऑफ सी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सी. व्हाट इज स्पीड ऑफ सी? आई विल राइट दैट ऑलरेडी. स्पीड ऑफ सी इज 5z is equal to length of E. Length of E divide by speed of E, उसका twice, so 2 times 6x divide by 6z. अरे वाह. Is that correct? Train C can cross a pole. Time taken by train C to cross a pole, length of C divide by speed of C. Twice of
time taken by E to cross a pole. So length of E divided by speed of E. Is that clear? उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा that 6 and 6 cancel, Z and Z cancel, and length of C will become 5 into 2, 10x. 10x. Yes, my children, are you with me? I'll hold. यहाँ तक ठीक है? I will need to create some space. So just confirm if you are done, if you have noted down whatever the necessary things are there. ठीक है? चलो बढ़िया. Now what I am going to do is I'll keep this x plus 40 equal to 20y, बाकी हटा देता हूं because इनका काम तो हो गया. X plus 40 equal to 20y. X plus 40 is equal to 20y. X plus 40 is equal to 20y. We have only one equation. दूसरा अगर मिल जाता तो सॉल्व हो जाता, है ना? ठीक है. Anyways, अच्छी बात है. आगे. So you just keep, आपके पास ऑप्शन नहीं है. You just keep working with the statements, keep translating it. Some people can do a lot of work here mentally. Try doing that. If you are able to do, it is good for you. आगे. Train B takes 12 seconds to cross a platform of length 180. So train B, length 2x plus 180 divided by speed of B, 5y. That is equal to 12 seconds. Wow. Very good. So this gives us 2x plus 180 is equal to 60y. Nice. So what does this give us? This gives us x plus 90 is equal to 30y. Oh, so from here you can equate x. Yeah, subtract. If you subtract x plus x cancel, 90 minus 40. Subtract x cancel, 90 minus 40, 50 is equal to 30y minus 20y, 10y. So y is equal to 5. वाह, अगर y 5 है तो कुछ वैल्यूज तो आ गए. Speed of A is 40. Speed of B is 50. All speeds are in meter per second. How do I know that? Because we are talking about seconds and meters. If y is 5, put it here. किसी में भी रख दो. 20 into 5, 100 minus 40, 60. So x is equal to 60. X is equal to 60 means 60 into 3, 180. 60 into 2, 120. 60 into 10, 600. 60 into 6, 360. अरे वाह, कितने सारे निकल गए. Yes, done till this part. ठीक है. ओके, चलिए बढ़िया. ऑल राइट, और कुछ बचा क्या इस्तेमाल करने के लिए? यहां तक कर लिया. ट्रेन सी कैन क्रॉस अ गुड्स ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लेंथ 150% मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन बी. और ए बाप रे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 150% मोर मतलब इसी, पहले तो मैं गुड्स ट्रेन की बात कर दूं. गुड्स ट्रेन जिसके बारे में बात की गई है उसका लेंथ is equal to length of B plus length of B plus 150% of length of B. 150% means 3 by 2 of length of B. अच्छा, length of B कितना है? Oh, we already have that, 120. So 120 plus 3 by 2 into 120 is 180. So goods train is 300. Now इसमें usually लोग गलत करते हैं, इसको ध्यान से करिएगा. Now train C can cross a goods train. So train C का लेंथ कितना है? 600 plus goods train 300 divide by speed of C. Speed of C
that is 5z plus speed of goods train, that is 15 meter per second. Am I right? Two trains coming like this, two trains coming like this, so their opposite speed, they'll be added. अच्छा, ठीक ठीक ठीक, got that. Good that you did that correction. बाकी तो ठीक है ना बच्चों? ठीक है? Is the rest of the thing? Rest of the things are fine, I suppose. Now, this one is equal to 10. This is equal to 10. So, I think from here 600, 300, 900 divided by 10, 90 is equal to 5z plus 15. So, 90 minus 15 is 75 by 5, 15. Okay, so z is also known. Z की value भी आ गई हमारे पास. Z is equal to 15. Is that clear? अगर z की वैल्यू 15 आ गई तो रख दो. 15 3s are 45, 15 6s are 90, 15 4s are 60, 15 5s are 75. So now we have A का speed, length and speed, B का length and speed, C का length and speed, D का length and speed, E का length and speed, F का speed is 45, length would be 45 into 15. 45, Z की value 15, multiply कर दो. So 2 to 5 into 3, that is 675. So now we have every value that is there. Yes, is that clear till now? So I think अब इसमें ये है ना कि आप इक्वेशन कैसे बनाते हो, कितना मेंटल कैलकुलेशन करते हो, जिसको आप शॉर्टकट बोलते हो. Shortcut is not writing this and just writing 6z 5z here. That is how you reduce your time taken. But in the exam environment, where the pressure of performance is really high, वहाँ पे मैं उतना recommend नहीं करता कि आप हवा में कुछ कर लो. पेन पेपर इस्तेमाल करो यार, सही करना ज़रूरी है. You are already doing 4-5 questions, मतलब जिनका भी ऐसा हो रहा है. If you are already doing 10-12, that means you must be doing really good, something really good. Feel good about it, go ahead with that. If you are already doing only 4-5 questions, तो बहुत ज़्यादा fight नहीं मारना है. Make sure that you do it correctly. Now I am not going to do anything new, है ना? In today's session, now I am not going to do anything new. ठीक है? Now I'll talk about general things. I'll answer queries if you have, and general psychological बातें. अच्छा, this set is over. Once you have the values, then whatever is the question, you can answer them. Am I right? So इसके बाद जो भी question पूछा जाएगा, you will be able to answer the question. Yeah, so in this one set, there are a lot of things that are involved. Ratios, the way to apply the ratios, then equations, time, speed, distance, that particular concept of train, and that one. Can we take all the 4 days expense in single variable? Example, day 1, Firoz total is 2225 as L and 2225 minus I. I think I and K is... हाँ कर लो ना. See, Snigdha, if it is helping you, do that. But as far as I know, it doesn't help because it looks really cumbersome. It looks really cumbersome. Before, that is why I always keep saying, check your ideas. How are they helping you? If they are not helping you, that's not great. For example, looking at F plus H 3400 and one value as F and the other value is 3400 minus F. If you are comfortable with this look, go ahead and do it. ठीक है ना, उसमें टेंशन नहीं लेना है. The important thing is to understand. The important thing is to understand how is it helping you. ये तो एक बात हो गई ना, ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है ना. अब आपको देख के कैसा लग रहा है, क्या मैं इसको बिना इसके लिखे हैंडल कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो go ahead and do it. That should be the point. ठीक है. Okay. Length of D. Solve कर दो ना इसको. The time taken by train D to cross a tunnel of length 140 meter is twice the time taken by train D to cross a person standing on the platform somewhere.
है ना, और या टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल, तो इस हिसाब से हो गया. Just Snigdha, just repeat the video. There is nothing else that I can say, because if I can recall, I had explained everything in detail कि अगर उन दोनों का सम इतना है, अगर एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, एंड 25 का मल्टीपल होना चाहिए. दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना. सो इफ आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ द वन ऑफ देम, द अदर वन शुड बी मिनिमाइज्ड, बट दैट हैज टू बी चेक्ड वेदर इट इज वैलिड विद अदर कंडीशंस और नॉट. इसलिए हम चारों का चारों हर बार इस्तेमाल करते हैं. 45Z, आई थिंक यू विल हैव टू रिपीट ना, अभी कहाँ से पता चलेगा इसमें. 45Z लेंथ ऑफ F, ये वाला इंफॉर्मेशन होगा ना, ये वाला इंफॉर्मेशन होगा, F से रिलेटेड कोई तो भी इंफॉर्मेशन होगा ना. देयर मस्ट बी ट्रेन F कैन क्रॉस अ टनल डबल इट्स लेंथ इन 45 सेकेंड्स. ठीक है, सो लेंथ ऑफ F प्लस ट्वाइस द लेंथ ऑफ F डिवाइड बाई स्पीड ऑफ F, दैट इज 45, एंड स्पीड ऑफ F इज 3Z, राइट. सो रिपीट द वीडियो, देयर इज नो अदर वे. ठीक है, इसके बीच में कहीं पे ना वो एक्सप्लेन किया होगा, उसमें ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा. ऑलराइट चिल्ड्रन, ओके, सो आई एम डन विद माय सेशन. इसके अंदर इसके बाद क्वेश्चंस होंगे. वंस यू हैव द वैल्यूज यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस. ऑलराइट, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई रोट दैट इन यस्टरडेज पोस्ट ऑल्सो. आई विल रिपीट नाउ एंड आई विल कीप रिपीटिंग दिस एज मेनी चांसेस as I get. Whatever you have learned till now, make sure that you take that entire thing in the exam hall. ठीक है, उसमें कैसे प्रॉब्लम होती है वो मैं बता सकता हूं. If you start trying to expand it in the next 10 days, 15 days, that is not going to be possible. ठीक है, feeling confident about जितना मुझे आता है उससे या उतना या उससे ज़्यादा मैं करके आऊँगा. That sensibility will help you. ओके, इससे ज़्यादा कुछ कोशिश करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा. ठीक है, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दैट गो इन द एग्जाम विद अ लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, कामनेस. देखो जो आपने किया, आपका धर्म कर्म के हिसाब से, आपकी ईमानदारी सच्चाई मेहनत उसके हिसाब से ही होगा, उसके हिसाब से ही रहा होगा. ठीक है ना, राइट. ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने पढ़ लिया रात को और सुबह उठे तो गायब हो गया, ऐसी कोई दवाई किसी ने आपको दे दी, ऐसा कोई इंजेक्शन दे दिया. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो वॉट एवर यू हैव डन, उसी का फल है, इज द फ्रूट्स ऑफ योर रीपिंग व्हाट यू हैव सोन, है ना. तो ब्लेम गेम नहीं करना है. ओके, जितना हो गया उसके बारे में कॉन्फिडेंस ज्यादा फील करना है कि अच्छा ये तो मैं कर चुका हूं, इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा. That is one part of it. Second, try doing maximum question that you do, try doing them right. Accuracy is the more important, especially if you are doing less number of questions. That means you have freedom to choose a question. Make sure that you have read all questions. ठीक है? A lot of times it happens that people come out of the exam and they say, अरे यार मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया. If you are saying that, that means totally you are doing something रॉन्ग. ठीक, क्यों? एक तो आपको आ नहीं रहा था, तो फिर आप क्या कर रहे थे? अगर आपको कोई सेट नहीं आ रहा है तो उस वक्त उस सेट के साथ मतलब क्या करना चाहते हो? छोड़ दो उसको, दूसरा सेट पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू डू इवन आफ्टर रीडिंग 4 सेट्स, दैट मीन्स point number 1, इफ यू हैव डन योर ऑनेस्ट वर्क ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो किसी से भी नहीं हो रहा होगा. बिकॉज 4 में से 4 एक भी सेट ना हो जिसने 3 महीना 4 महीना प्रिपेयर किया हो. If you have prepared for 3-4 months and you are not able to make out anything out of 4 sets, that means the sets are going to be really difficult. ठीक है? Okay? Suppose they are not difficult but you are not able to do it. दिन खराब मत होने देना, because these things play with your mind. ठीक है? CAT is a psychological exam. आपको कुछ ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, यार मॉक में तो मैं 2 सेट कर ही लेता था, यहां नहीं हो रहा. इस तरह की बातों को रोकना है दिमाग में आने से पहले. आएंगी, डर लगेगा, फालतू चीजें होंगी, बट डोंट फॉरगेट आफ्टर दैट LR सेक्शन यू हैव क्वांट का सेक्शन ऑल्सो. एंड इन क्वांट द सर्टेनिटी ऑफ क्वेश्चंस अपीयरिंग फ्रॉम थिंग्स दैट आर नोन टू यू इज वेरी हाई. है ना, आपको पता होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, या जो भी चैप्टर्स हैं उसके ही क्वेश्चंस आएंगे, उसमें उतना वेगनेस नहीं होता ना. DILR देयर इज अ लॉट ऑफ वेगनेस. खत्म कर दूं?
अच्छा, there's a lot of vagueness in DILR. ठीक है? So just be careful of that. Alright, so I think we'll close the session now, right? How many mocks do you suggest in these last days? 10 days, 5 mocks, not more than that. Really helpful. Chalo, fatapat feedback though, and we'll close the session. You attempt the exam when there are 8 sets. I did not understand that. Will there be a recording? Yes, available. You can give feedback and then we can close. Mock में एक ही सेट सॉल्व हो पा रहा है, बहुत बढ़िया है. एक हो रहा है तो एक एंजॉय करके करो, और दूसरे में से मैंने जो बताया था अभी वीडियो के दौरान बहुत डिटेल में बताया है कि जिनसे कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करें. Will you upload? This is already uploaded automatically. Okay. Will there more sets like this? As of now for caselets this is done. ठीक है. किसी और टाइप के सेट्स लेंगे, ऐसा हो सकता है. Great session. Thank you. Thank you. Do well guys. Chill मतलब not chill. Chill मतलब mentally शांत रखो अपने आप को. Happiness के साथ जाओ. जो होगा अच्छा ही होगा. It is just another exam. There are a lot of exams that you have screwed. So don't worry. Go with happiness. ठीक है. उससे क्या होगा ना, चांसेस ऑफ डूइंग वेल विल इंक्रीज. एक्सेप्ट करो हर बात को, हर चीज़ को, और शांति से जाओ. क्वांट इज़ वेरी टफ. येस इट इज़. Not because of time problem, but I am not able to solve more than one. No, that's okay, Vishesh. I have already answered you. One set is very good. Other 2 sets just read, and if you are able to do one question in a set, great. Go ahead with that. Abhinav, maza aa gaya sir. Thank you. Good. All the best. Whenever I attend your session, feels more energetic. All the best, beta. बस बढ़िया से जाओ, फोड़ फाड़ के आ जाओ. ठीक है. हाँ, फोड़ फाड़ का कोशिश नहीं करनी है, क्वेश्चन देखना है. एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द पेपर. ठीक है. अगर पेपर आपको ग्राउंड पे लेके आ रहा है, इफ इट इज ब्रिंगिंग टू योर औकात, देन कम डाउन, देन एक्सेप्ट इट, देन ट्राई डूइंग समथिंग. मान लो क्वेश्चन आपने देखा, पूरे 22 क्वेश्चन क्वांट के देख लिए, पूरे 20 क्वेश्चन एलआर का देख लिया और एक भी नहीं हो रहा, काम डाउन. अच्छा, इसका मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ईमानदारी से तैयारी की है. ये तो गारंटीड है ना कि अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो आपको पेपर का आधे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कर पाओगे. बॉटम लाइन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू 10 क्वेश्चंस. दैट इज देयर. ठीक है. ऐसा कुछ एकदम मतलब डिफरेंट हो जाएगा ऐसा भी नहीं है ना. आई कैन सॉल्व इन टाइम, अदरवाइज आई कैन सॉल्व 3 सेट्स. So if you are not able to do 3, focus on doing 2. कितना simple solution है. Do not complicate the situations, just go with the normal things. One thing CAT has taught me is to be humble. Yeah, absolutely Ayush. And if you are not, it will bring you to the humbleness. ठीक है. I have no plan B if my CAT exam goes wrong. I think ये सब ना, यही सब गलत बात है नवदीप, यही सब गलत बात है. Plan B C तुम होते कौन हो प्लान डिसाइड करने वाले यार. I mean, again, I do not believe in fate or God, but I am no one to create a plan, बच्चा. I am nobody to create a plan. मेरी एबिलिटी, मेरी औकात है ही नहीं प्लान बनाने की. मैं काम कर सकता हूँ, मैं टारगेट डिसाइड कर सकता हूँ. नवदीप, आर यू विद मी? एंड एवरीवन, I can decide a goal. I can decide the steps of the goal, and I can put my life on each step of the goal every day, every time. Bloody hell after that, even if I don't get the goal, or maybe my mind changes after reaching the goal, then what? Are you guys with me? Yes? No? Anything? मेरा ही मन बदल जाए एंड पॉइंट पे बस के, यार ये तो चाहिए ही नहीं था, इससे तो खुशी नहीं मिल रही. A lot of times it happens in our circle. There are a lot of people who are like millionaires, billionaires, या कुछ मेरे दोस्त जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लाइफ में. यार गाड़ी खरीद ली, उसके बाद इंटरेस्ट ही खत्म हो गया. They wanted to buy something like a very high end. Then what? Are you getting my point? तो ऐसा मत सोचो, ये मत सोचो. आप ये सोचो कि ठीक है, ये 3 महीने जो मैंने जॉब छोड़ा, मैंने ईमानदारी से काम किया. देन लेट्स सी व्हाट एवर रिजल्ट कम्स. मैं रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करूंगा खुले दिल से, खुले हाथ से. आई विल एनालाइज द रिजल्ट एंड आई विल सी माई बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एट दैट टाइम. ठीक है. डोंट गो इनटू दोज दैट सेंटिमेंटल ट्रबल्स. खुद से क्रिएट मत करो. आप बस शांति से पेपर दो. दैट्स द ओनली थिंग इन योर हैंड. ठीक है. डिड आई ऑफेंड एनीवन? अगर ऑफेंड किया तो अच्छा है, भड़क जाओ और पेपर में फोड़ के आओ फिर, और क्या. क्वांट में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इनफ. ये इनफ का आंसर मैं बहुत पहले बहुत बार दे चुका हूँ. इनफ के चक्कर में मत पड़ो. रिवाइज ऑल चैप्टर्स, एज सिंपल एज दैट. रिवाइज ऑल चैप्टर्स.
क्यूरियोसिटी चली गई है अब. अच्छा, इज अरिथमेटिक इनफ, ये क्वेश्चन ही गलत है ना. क्या मतलब है इसका? अरिथमेटिक इनफ फॉर व्हाट? इनफ फॉर व्हाट? डू एवरी चैप्टर, डू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरी चैप्टर. ठीक है, राइट नवदीप, है ना. आप जाओ खुश होके पेपर दो कि यार मैंने अपना काम कर दिया. ठीक है, मतलब इतनी मेहनत, इतना ईमानदारी होना चाहिए कि लास्ट स्टेज पे जाके लगे कि यार अब तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने तो कर दिया ना, जो मैं कर सकता था उससे भी ज्यादा कर दिया. इस बात के लिए हैप्पीनेस फील करो. दैट्स अ रियली गुड थिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली कैट एग्जाम. व्हाई ओनली कैट? एवरीवेयर. मुझे जो करना था वो मैंने तबाही मचा के कर दिया. ठीक है. All right, children, so I am going to end the session now. Okay, and all the best, all my blessings, love, regards, everything to everyone, and do really well to your deserved situation and things. ठीक है ना. ये एटीट्यूड, ये अप्रोच हमेशा रखना है. ठीक है, जितना मैंने तैयारी की उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट आया या आएगा. बाकी मैं कोशिश लगातार करूँगा. कोई चीज़ ख़राब है अच्छी है उसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगा. आई विल नॉट कंपेयर एनीथिंग विद एनीथिंग. आई विल डू माई वर्क, आई विल वर्क ऑन माई गोल्स, आई विल वर्क ऑन द स्टेप्स ऑफ माई गोल्स इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर एंड इन द हार्डेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ और सोचने की आपकी ना तो एबिलिटी है और ना ज़रूरत. ठीक है, मैं हमेशा यही बोलूँगा. इट्स नाइदर योर एबिलिटी नॉर योर नीड नॉर योर जॉब. यू जस्ट डिसाइड गुड फॉर यू. Get on to that. And as far as CAT exam is concerned, once again I repeat, just go to the exam. ठीक है, शांति से जाना, किसी से कोई बातचीत या वो क्या लड़ाई डिस्कशन नहीं करना. कोई कुछ पूछे नॉर्मल तरीके से जवाब देना. मेक श्योर दैट यू गो, यू जस्ट स्टे देयर इन द एग्जाम फॉर वट एवर ड्यूरेशन इट इज. एवरी सेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि यार पूरा ख़त्म हो गया. टेक अ डीप ब्रेथ कि अच्छा अगला सेक्शन, फिर अगला सेक्शन, बिकॉज वो पूरा सेक्शन खराब हो जाएगा ना इफ यू गो विद अ सेट, विद अ माइंड सेट. ठीक है, चलो आई क्लोज इट नाउ. ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन. टेक केयर. इट इज अपलोडेड ऑलरेडी. जैसे मैं बंद करूंगा इट विल बी अवेलेबल.